ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दोनों जगह पे नए मैच आ रहा है। लेट्स सी, एक एक करके चेक करेंगे। परसों के दिन ज़्यादा टाइम नहीं मिला था मुझे, आज एक्सप्लोर करेंगे पूरा। अरे हाँ, जानीन वाली टीम करनी थी, भूल ही गया मैं। मेरे दिमाग से ही निकल गया वो। So let's just give it. और इसके सेट भी वार्म करना है एंड आई थिंक ये तो हो जाएगा, इसका कोई सीन नहीं है। ये कितना है? 185। हम्म, 60 यहाँ पे लगेंगे, 45 यहाँ पे लगेंगे। 105 ज़्यादा है मेरे पास, ऑलरेडी है। इसका क्या सीन है? 12 यहाँ पे लगेंगे, 20। तो ये लग रहा है मुझे 32। एक काम करता है, पहले इसको निपटा के आता है। अच्छा, ये भी चेंज हुआ ना इनका नया। ये अनसन भी करनी है इस टीम के लिए लॉल। दिमाग से ही निकल गया मेरे। तो पहले इसको चेक करता है। आई थिंक मैंने पहले दबा दिया था वो, कोई बात नहीं। ये लग रहा है। Teamwork is dreamwork. Look at you, Booza. You two. Time to end wrath from the sky. लाओ दे लाओ। कुछ ज़्यादा हील कर दिया क्या बैनी ने? कितने चाहिए? आई थिंक 32 चाहिए ना मुझे। 5 चाहिए बस और। Off we go. Everybody stand back. डियो ने भेजा रे, हर बार की तरह सैक्रिफाइस। आई थिंक अब मुझे इस पॉइंट पे ना बेचारी को कर लेना चाहिए लेवल अप। कुछ नहीं है बेचारी के पास, अपग्रेडेड आर्टिफैक्ट्स है ना कुछ है। उसे तो बस मैं अपना ये C6 के लिए यूज कर रहा हूँ। बोनस ये दे रही है, कितना दे रही है वो? अच्छा, आई ऑलरेडी हैव 147 प्लस 200 दे रही है। ये तो पहले उड़ रहा है।
वो भी दे। कोई ना, इतना तो मिला एटलीस्ट। पता नहीं कब से। एक मिनट होल्ड ऑन। कहाँ गई बेटी? हाँ, कितना 32 चाहिए ना आई थिंक। एक के लिए मेरे को वापस से बॉस ने बताना पड़ेगा। उठ सकते हैं कि तो भी नहीं। Burn it down. Let's light it up. Everybody stand, get अरे to यार work. जल्दी कर दी ना मुकड़ में, वो घूमेगा अभी। घूम ले भाई को। Suffer the wrath of the pyroclastic surge. मोह पे रैप्टा। चप्पल फेंक के मारा उसको मुंह पे। ला दे। अब नहीं चाहिए तो अब 3 दिए हैं। एक चाहिए था तो 3। चलो तेरा काम हो गया। एंड चलते हैं वापस से। बुक्स तो वैसे भी फार्म करनी है मुझे, बुक्स तो भूल ही गया। Incoming. ये हो चुका है। ये करवाने तेरे लिए राइट। टोटल 6 चाहिए यहाँ पे और 6 ही है। ये कितनी है करवाओ पहले। होल्ड ऑन, पहले जो हाथ में है उसे तो कर ले। बोनस वाला नहीं है ना यहाँ पे कुछ। बना बेटे। तो ये 3 चाहिए मेरे। 3 है, 3 और चाहिए। इलेक्ट्रो कैरेक्टर तो अभी अच्छा ये आंसर लगेगी। हाइड्रो कोई बिल्ड नहीं कर रहा हूँ ना मैं। लेट्स लेट मी सी। हाइड्रो का पड़ा हुआ है मेरे पास। अनीमू कहाँ गया? अनीमू या तो मैं अंधा हूँ या यहाँ पे है ही नहीं। है तो सही। हाइड्रो हाइड्रो कैरेक्टर नहीं है ना फिलहाल। मतलब है बट कोई अपग्रेड नहीं करना होगा उसका। सारे करते वो भी चाहिए। दो यहाँ पे 12 चाहिए, 24 चाहिए। इसको परमानेंटली नहीं कर रहा ना। अब 24 चाहिए मुझे राइट। हेलो व्हाट्स अप बड़ी। कार्तिक वर्मा क्या हाल है? कैसे हो बड़ी? ये लो, ये 24 करके पटक दिया मैंने। और कुछ चाहिए इसके लिए? इसके वेपन के लिए चाहिए होगा मुझे एक्चुअली। हाँ कहाँ गई? ओके तो ये हर बार करना पड़ेगा मेरा। 12 यहाँ पे हो गए, 24 यहाँ पे हो गए। ठीक है गुड। अभी बस ये 6 करवाने होंगे, हो जाएंगे। फिलहाल तो भाई किताब ही नहीं है इस पे। ये फार्म करना पड़ेगा। ला तो पहले ये पकड़ा मैंने। ला दे कुछ अच्छी चीज। कुछ खास ना दिया। चल कोई बात ना है। तेरा क्या सीन? अच्छा ये डेली भी पूरा हो गया उस चक्कर में। चलो
फूड Add डिलीवरी, as. अब काय का फूड डिलीवरी? Thank you for. चलो डेली का लफड़ा तो हो गया। इस लंगूर को उठाता हूँ पहले, मरी पड़ी है कहीं जाके। जूता खिलवाएगी ये मेरे को। सुमेर वाला बाद में करेंगे, पहले इसका करवाएंगे। चलो यो सन गोकू व्हाट्स अप, हाउ आर यू बडी? Coming. सिट हेलोली। Huh? Why are all these people gathered around? Did something happen? Let's go take a look. इस आवाज एको क्यों हो रहा है इतना? How's it looking, Doc? Is there any hope for him? कौन ले पड़ Chill, गया? bro. I'm thinking. ओके अभी ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, ईफा। This dude's Milray, right? What a little champ. डिजाइन तो Barely बढ़िया है made a कैरेक्टर का। noise, despite all the pain he must be in. Did he fight in the war? That's right. We'd never normally send such a young Tepetlosaur into battle, but we couldn't stop him. Developed a real knack for sneaking Tepetlosaur नहीं, वो past us थाली and पिट running सो रहा off है। to the front line to fight the abyss. Yeah. He's a smart one, that's for sure. Might not be the देखिए strongest, उनका companion। but he ran rings around those abyssal monsters. We even awarded him a warrior's medal after the war ended. But then he took a turn for the worse a few days ago. अच्छा He's been having fainting spells ever since. Poor little guy. Already a battle-worn veteran, yet still so young. देखना अभी उठ के चप्पल मारेगा वो उसे। Hey, Kachina, what's going on here? आवाज तो है ना भाई इसके? Traveler, Paimon. है A नसीब। long time no see. So basically, there's this young Tepetlosaur in our tribe called थाली Milray. पिट और We're not sure what's wrong with him, but he's been getting weaker and weaker by the day. Eva's taking a look at him. तो भाई इतना सारा उसके ऊपर आर्मर लगाया तो वो थकेगा is ही। here too. We're all really worried about him. When my daughter got lost in the mountains, it was Milray who helped bring her back. To think that he made it through the war, but now that peace has finally come. Steady there, bro. We'll find a way. ये इस लंगूर को देख, Ah, you're that Cuckoo-thesaurus from the vet clinic. तो कुछ थसोरस। What are you on about? So this Aoife you just mentioned, does it actually... Hey, yo, everyone! Please chill. I think I've got this figured out. For a juvenile saurian, he showed remarkable courage in the war, but he's too young to be using that much phlogiston. As a result, he developed a rare pathological change. The initial symptoms might not have been obvious, but he's gone untreated for so long that his condition is now very serious. You Yeah, mean they- he originally got sick during the war, but the symptoms only just started to show up now? That's right. He may have just been acting tough this whole time. Didn't want his friends stressing out over him. मीनवाइल इसके सर पे देखिए ये पेड़ पत्ते, वो भी बोल रहा है साले चप्पल से मारेगा तेरे को, पहले सर से हटा मेरे जो Please लगाया पड़ा help है। him. Something this rare? I don't have anything on hand that can treat it. Good news is that I read about a similar case back when I was still studying. The scroll mentioned 2 essential ingredients. मतलब हम फिर से फार्मिंग पे जाना। First up, an herbaceous perennial known as an ocean zephyr. Though they can grow practically anywhere, they're exceedingly rare. Second, honestly, I couldn't figure it out back then either. The name recorded was Sacred Flame Crystal, but there wasn't much else to go on beyond that. Sacred flame? Like the one burning in the stadium?
वहां से कौन सा Milani क्रिस्टल and I निकलेगा? took part in the pilgrimage of the return of the sacred flame, we collected loads of contending sparks during the team stage. Apparently, they're sparks from the sacred flame itself. They even make you feel all warm and fuzzy while you carry them. Do you think these crystals might be something similar? बता. From the name, I'd say we're looking for a rarer, purer form of sacred flame. You sure there's even such a thing? We've been in that land for ages now, but we've never come across anything like that. So it would seem, as it happens. Huh? For real, Uncle Pakal? It's a coincidence that I've even heard हाँ of it. झूठ बोल रहा है वो नल्ला. Apparently, the people of Natland knew how to make a special kind of sacred flame crystal way back when. I'm not sure exactly how they did it, but the other chiefs might know something. I'll go ask them. क्या Thank पूछ? you, Eva. Your diagnosis was a huge help. Mind if I keep you a little longer? Sure thing, dude. I'll stick around until we've got some results. Great. तो बेसिकली ये भी एक In that डॉक्टर है. case, let's go our separate ways for now. Milray needs some लेके तो proper रखा rest, बैकपैक में इतने सारे. and he's not going to get that with so many people gathered around. I'll let you all know as soon as there's any news. Fingers crossed, he'll soon be on the mend. अब ये पकड़ाएगा कुछ क्वेस्ट में. हैं? अभी कौन से क्वेस्ट में बिजी हो? अरे भाई. तो ये कौन सी क्वेस्ट कर रहा था मैं? अरे टूर्नामेंट वाला कर रहा था मैं. लॉल. I've read almost every novel from Yai Publishing House. Pretty normal, right? Let's ride. हाँ नॉर्मल. तेरा तो सभी नॉर्मल है. Try and stop me. इसको देखियो. हाँ ऊपर है. अबे ये क्या कर रही है? और कितना ऊपर जाना है भाई? इतना ही ना. अच्छा ये रही ना बेटी. Oh, you're here already. Yep, my dad whipped up something fantastic as always. He's a great cook. He can turn any protein or vegetable into something delicious. बुक्कड़. No wonder you look so refreshed. That's the power of a good meal. That's right. I was hoping to bring Uncle Akatl with me, but he wasn't home. So I guess you're stuck with me. Uncle Akatl is our chief, by the way. Who better than the chief to introduce you to the Bila tribe, Musa. right? I've never given an official tour before. So I'm thinking I'll just explain things as we go along. Is that करो. okay? करो करो. Of course, that sounds great. Okay. Whew. Then let's start in that direction. रैंडमली चूज करती है क्या भाई? ये उसने देखा हुआ है. कहाँ है ये नली? ये बाद में उठाएंगे. मैप पे देख के. मैप पे मार्क भी करना पड़ेगा ना मुझे. अरे मेरे पे ये पड़ा हुआ था ना. फाउंटेन की चाबी क्या कर रही है मेरे पे? चल कोई बात ना. रुक होल्ड ऑन. मुझे इसके सेट का भी एक बनाना ना. मेरे दिमाग से निकल गया भाई. वो दिमाग से निकल गया. पिमजी का मैंने कुछ किया था. मुझे मिला कुछ. डैमेज अटैक. एक 4 कमांड देख. क्रिटिक मिल रहा है क्या? अटैक मिल रहा है. एक्चुअली कर सकता हूँ बट लेट्स सी.
ये स्टेटस बताओ इसका। ना ऑलरेडी फड़तू स्पीच निकला वो। तो बेसिकली इसमें नहीं है अभी, मगर अगर मैं बना के रखूँ एक, क्योंकि आई डोंट थिंक इसका दूसरा कोई बढ़िया सेट आएगा, तो लेट्स जस्ट यूज दिस। या फिर शाओ के लिए सेट बनाऊं और डैमेज वाला। होल्ड ऑन, शाओ का लेट मी चेक। कहाँ गया? ये यहाँ का है ना डोमेन, डोमेन ये बताओ तुम। ठीक है। 6 सेकेंड्स तो क्या ये मैक्स आउट कर सकता है फटाफट? होल्ड ऑन, मुझे रेडिट मार दो फटाक से। लॉन्ग नाइट्स ओथ है तो सही। अब इसका मुझे कहीं कंपैरिजन, मतलब डैमेज परसेंट कहीं पे देखेगा? दस परसेंट का डैमेज डिफरेंस है। हम्म हाँ तो ठीक है, मैं शाओ के लिए बनाया हूँ। सेट सही है ना? प्लंजिंग अटैक डैमेज बोनस। लेट्स सी, क्या मुझे 4 स्लॉट वाला मिलेगा? प्लीज 4 सब स्टैट दिलाया, आगे दिया सब स्टैट। कोई ना, उसको लेवल करके देखता हूँ। ये निपटाओ। तो कोई आधा लेवलअप किया हुआ पड़ा है क्या मेरे पास? नहीं है। अरे अरे, मुझे क्यों लग रहा है कि कोई ना मिल जाएगा ना, रख दिया। सो बेसिकली गॉबलेट्स के साथ तो लक निकलना ही नहीं है वरना फालतू बेस भाई। 18 और 20, एक एक भी मिला ना उसमें तो भी हो सकता है वो।
डिसेंट सा पीस, लेकिन ये कोई व्हाट अ वेस्ट। मुझे लगा शायद वो 4 पीस अगर ये है 4 सब सेट वाला मिल गया तो उसको लेवल अप करके करवा दूंगा। बचे हुए 2 स्टार My तो place मिलने is ही है over उसमें there. हैं? See that fruit stand out front? My house is right behind it. You have a fruit stand in front of your house? Does that mean you grow the fruit yourselves? You guessed it. My family runs a huge orchard. We live really close to the main entrance of the tribe. एक्चुअली So every मैं बोलता हूँ उसको morning पूरा I लेवल wake अप up कर ही to the लेते हैं, sound of एक all तो the मिल ही people जाएगा ना and उसमें। carts on the road. That's also when my parents start work. So that's how I know it's time to get up. And then you all work in the orchard together. Well, knowing it's time to get up and actually doing it are two separate things. Most of the time, I end up curling under the covers and falling back asleep. Oh, वो तो Karma करेगी तू। gets you. Sleeping in is the best kind of sleep. Plus, when you have the traveler to wake you up, it's no big deal. अच्छा मेरा वो इसका वही काम है क्या इसका ट्रैवलर का? No, that was just a joke. Don't scare Paimon like that, traveler. Well, maybe you can both sleep in sometime. Once I get up, I usually help my parents around the house, head out for training, then come home for lunch. बुक After lunch is when my parents do their delivery runs. So ये वैसा then हो it's रही my है। turn to work in the orchard. पाइमोन अच्छी जोड़ी बनेगी इनकी, फुक्कड़ Oh, फुक्कड़ Paimon जोड़ी। would love to see the orchard. Can you show us? Sure thing! We'll go right after this. But first, come with me. पक्का भूख लगी होगी इसे, फिर से वही उंगली दिखा के। अबे तुझे रास्तों का नाम नहीं बताया क्या जहाँ पे रहती है वहाँ पे उंगली दिखा के कहाँ बुला रही है भाई। मीनवाइल इसको करो लेट मी सी 2 रेट में जा रहा है कि 2 इसमें जा रहा है। दोनों में से कई 2 रोल कहीं और तो जाएंगे, मतलब या तो 2 क्रेटेड में जाएंगे 2 क्रेट डैमेज में आएंगे तो फिर एक रोल मिलेगा सिंगल। कुछ आइडिया नहीं है। एक क्रेटेड में गया और आखिरी रोल क्रिट डैमेज में जाएगा क्रिट रेट में जाएगा। ऐसा क्रिट रेट पे गया है। यस इसका क्या अचार डालूं मैं? चल स्टार्टिंग बेसलाइन स्टार्टिंग के लिए तो ठीक ही है, कुछ नहीं अच्छा से तो कुछ तो मिल रहा है। ये इसको मैं चेंज करवाऊंगा फिर वार्म करूंगा मैं। ये क्या तेल लेना है, इसको मेरे को दबा के वार्म करना ही पड़ेगा। कुछ आवाज आया मुझे यहाँ पर। ये कौन सा स्टॉल बेच रहा है? जगह तो बढ़िया है सो फार। नॉट बैड। ये यहाँ पे बैठी है देखो, जिम इंस्ट्रक्टर। Oh, Coach Yan-san, are you here to do some training? Nope, just doing some maintenance on the equipment here while I have some time. Oh, it's you two! Welcome to the Collective of Plenty. Look, I bought this at the stadium the other day. Wait, we've seen that graffiti design before. बताओ। It's not easy to get your hands on one of these. MC की I had to wait in a super ग्राफिटी long बना। line. Ooh, I bought a यार, top but with that सिर्फ design too. लाइक करो I सब्सक्राइब hung करो it ना up करो, right लाइक next to पैक my हो। bed. बता रहा हूँ देते कैरेक्टर देती है पाइमोन सबसे पहले स्क्रीन में से निकाल के चमाट भरेगा तुम्हें, वो भी चप्पल से। वो भी उसकी चप्पल नहीं है, पता नहीं क्या पहना उसने, फिर भी उससे। Don't be shy. After everything you did for Natlan, you deserve the recognition. Oh, I meant to ask, what brings you out here anyway? We're just doing some अबे गधी। adventuring. नहीं, We hold don't on। have any concrete plans. इनवाइट किया था हमें ईएन सर ने, है ना? किसे? इन दोनों को। और अब पूछ रही कि तुम्हें यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए यहाँ पे? अबे इतने मंदबुद्धि है क्या ये? We ran into Varessa on the road, and she was nice enough to lead us the rest of the way. She's even giving us a tour. It's my pleasure.
घुमाने वाली थी ना Still तुम। keeping up with your training, Veressa? No slacking, I hope. Yes, Coach! Did 3 full shuttle runs just as you instructed, Coach. Good. Then we'll continue with the training plan. As for your diet, actually, no dieting for now. As you are. Feel free to use any diet of the कर भी ना equipment पाएगा। around here. भूख से But निपट if you're जाएगी। planning to do strength training, make sure you have a spotter. Of course. Don't need to tell me twice, Coach. Wait, but isn't a special diet a huge part of bodybuilding? Veressa doesn't need one? Oh, it's kind of a long story. I suppose you could say Veressa is among the select few who have a natural gift. When she कौन सा first natural started gift? training with me, I started her on a standard training regimen and wrote out a simple recipe plan to give to her father. But it left me so hungry. I couldn't even muster up the energy to make it to class. Yeah, that was my fault. It was just your average nutrition plan, but Veressa's metabolism is something else. Once I studied her eating habits, I was able to tailor it to her needs. Yeah, Coach is really thoughtful that way. Now I feel like I'm making real progress. And the training and classes are a lot more fun. Veressa is currently my ऐसे top कौन सी student. classes में जाती She है can भाई? lift even more than me. और Wait, but you're the coach and the victor of the pilgrimage. फिर भी Don't पोस्ट sound so surprised. This kind of thing is really common in the fitness world. Everyone starts from a different baseline. Wow, that's amazing! Paimon would have never guessed. I'm not exaggerating either. Veressa is extremely strong. All she needs is a bit more confidence. Oh, well, it's just because Coach is a great teacher. It didn't take much effort at all. अच्छा Oh, believe me, I'm not. I mean, sure, I can face a few monsters and lift some heavy training equipment. But फिर I'm useless when it comes to fighting other people. I'm scared I'll hurt someone. Oh, that makes sense. मैं तो फाइटिंग में What गोटियां थोड़ी ना about the खेली। pilgrimage? अजीब लंगोर है। I've never placed or even made it out of the team stage. I'm not good at fighting actual people. When it comes to power, it's all about control. Take these weights, for example. It takes strength to lift them, yes, but also to control the weight when you set them down. True mastery means control during both motions. I know that, and I can do it just fine during training. But whenever I have to face a real person, I start to doubt myself. Thanks. I appreciate the support. As long as I keep training, I'm sure I'll get it eventually. Well, we should get going, Coach. I told the Traveler and Paimon I would show them around the orchard. Sounds चलो, good. I दिखाओ। hope you enjoy your time here. जबकि इस गधी को घुमाना चाहिए था क्योंकि इस गधी ने अबे हाँ ये घुमा लो तुम बार बार हमें इस क्वेस्ट से उस क्वेस्ट पे उस क्वेस्ट पे यहाँ से वहाँ से यहाँ सारे लिंक बर्बाद हो गए गलत क्वेस्ट पे हाथ लगा दिया मैंने कहाँ जाना Rev the engines! What up, my dudes? Man, I could tell we're totally on the same wavelength. The name's Aoife, a vet from the Flower Feather clan. This here's my assistant, Kakuku. Dude's all about copying what others say. We're वो तो दिख ही रहा है The Traveler and Paimon, yeah? Everyone's heard all about you two. You're absolute legends. डिजाइन डिसेंट लगा The मुझे total इसका package. Brave, wise, and strong. Best hero duo I've ever seen. No contest. Aww, you're making Paimon blush. Truth is, I spent the war treating wounded Saurians. Never got a chance to fight alongside you. Yo, thanks, bro. I appreciate that. There was always a long और line ये outside लंगूर जैसा Aoife's कॉपी किया clinic उसने back then. Even Yeah, bear. Kakuku was so busy, he was running around like a headless chicken. अरे Seriously, seriously. True that. More wounded were piling up by the day. Dude, the Abyss is no joke. Sneaky enough to hit us right where it hurts. Lots of docs have dropped at their posts over the last few years. There's some fresh talent rolling in recently. I'm hoping they could step up quick.
But vet med's no joke. There's a ton of challenges to overcome before you could be a qualified vet. तो अगर ये पहले शो अप होता तो वो ये ना निपटती ना, किसके किसके बैन निपट गई थी स्टोरी में. No matter how hard you hit the books, you're still नाम gonna ही run भूल into गया all था. kinds of weird diseases that are hard to treat. Like Milray's. So rare it doesn't even have a name. If my old man hadn't forced me to read all kinds of different stuff when I was a kid, I'd probably only be able to suggest a more conservative treatment. It's true what they say, bro. There's always more to learn. Oh, so your dad was a vet too? Yeah, totally. Our family's medical knowledge has been passed down over generations. My old man started steering me toward being a vet when I was a kid, schooling me on all kinds of herbs. And man, Achha. if I forgot anything, out came the broom. My family's चमार been तो vets पढ़नी for चाहिए. generations now. No clue who it was that kicked off the tradition, though, you know? Back when I was a kid, my dad said something about our skills being medicine born of guilt. But the reason we got into it doesn't really matter. What matters is that it's useful. Guilt? Sounds pretty strange to Paimon. Usually you only feel guilty when you've done something wrong. वही तो. Who knows? After he passed, there wasn't anybody else I could ask. I figure it's because guilt gnaws at anyone practicing medicine. When you fail to fix someone up, I've been there. So I'm gonna do my best to make sure that doesn't happen this time. I don't recall ever seeing a record of any patient with his malady who was successfully cured. So maybe Milray will be the first. करो फिर करो करो. Heck yeah, I do. Oh, looks like the Chiefs are back. Let's go see what they have to say. अभी इसे ट्रैक मत करो वहाँ पे. वो फ्री हुआ क्या? नहीं. ये तो कर ही सकता हूँ ना मैं. इसके बारे में भूल गया था मैं. सॉरी माय बैड. हाँ सीरियसली इसके बारे में भूल गया था. ये पहले फोकस करता है. मेरे दिमाग से ही निकल गया वो चीज़ कि ये कर सकता हूँ मैं स्टोरी फोकस मोड. अब बार बार ये वाली क्वेस्ट मेरे बीच में नहीं आएगी. विजुअल्स के मामले में तो इम्प्रूवमेंट है बाकी एरिया से थोड़ा सा. डोंट टेल मी अभी ये सर से सर भिड़ाएंगे एक दूसरे में. Good girl, Vanana. अच्छा Thanks for guarding the house. Now let me take a good look at you. Did you have another growth spurt? Hey, I was just taking a look, not inviting you to wrestle. Next time, okay? Oh, this is Vanana. She keeps watch over the orchard when no one's here. She's a tough little thing, but also a clingy baby at heart. ऐसा क्या लग रहा है चमाड़ देगा अभी घूम के. Did you say little? She certainly doesn't look it. Anyway, this is my family's orchard. Come on, I'll show you around. दिखाओ दिखाओ. Whoa! It's even bigger than Paimon imagined! Look at all the fruit! It looks delicious. मैं बोला ना मैं ये भुक्कड़ दोनों एक जैसे ही है. This is the collective of plenty, after all. Being so close to the volcano makes the soil extra fertile. So everything that grows around here is amazing. Especially the fruit. We sell a lot to the other tribes, give some to family and friends, and keep the rest for ourselves. Well, if you have to live next to a volcano, at least you get something good out of it. That's right. Since we're here, why don't we pick some and have Hey, ourselves you are doing a little quest. snack? Yes. Wait, but didn't you just eat? Yeah, but there's always room for I'm currently dessert. doing the Plus, we don't have to pick that many. tribal quest. A few dozen should do it. You know that fruit stand in front of my house? Well, as a kid, whenever my dad was working at the stand, I would tug on his shirt and ask for a piece of fruit. I would scarf it down in a heartbeat Uri? and then ask for another. Before long, people would gather around just to watch. My dad told me I made the fruit look so delicious, more and more people started coming to our stand, which, of course, made me want to eat even more. The customers would ruffle my hair and say,
It's good to have a healthy appetite. You'll grow up big and strong for sure. I mean, what kid doesn't like a compliment? So I would smile, which would get my dad to smile. And then my mom too. Aw, that's so cute! Plus, free fruit whenever you want. Jealous! With all that said, it also helped that our fruit actually tastes really good. And I'm not just saying that. You'll see what I mean in a It's minute. me, YouTuber. I just changed my And name. there's an epic feast showdown in a few days. So we're I providing see. a bunch of the fruit for the desserts. So you changed your Epic name. Feast Showdown? Good, good. Welcome back. Sorry. It's When, basically a speed right? eating contest. We need to I prepare remember a you ton now. of ingredients. So don't worry about anything Welcome, going Gwen. to waste. Welcome to our live stream. Okay, let's get picking. Alright. Where should we start? Why is there a mushroom over there? Oh, that kind of mushroom. They kind of appeared out of nowhere when we first planted the orchard. They grow really fast and don't require any water or fertilizer. Oh, and the Luna flavor is 05, amazing. 015. Okay. You can So grill that's what you them, change it stir to. fry them, or even eat them raw. The flavor has almost a fruity taste to it. A mushroom that tastes like a fruit? What? That's a new one. Weird sound कर रहा हो. Mushroom एक fruit के taste जैसा. Yeah, that could be. Anyway, as far as I'm concerned, if it tastes like a fruit, then it fits right in. Who cares where it came from? ये सिर्फ कुछ भी खिला दो तुम. Pick as much as you want. Might as well get some mushrooms too, and I'll whip up something to eat. Seriously? This, and a few of these. Hold on. इसको use करेंगे ना? तो इतना है ही नहीं. और कहाँ है? Whoa, that's quite the haul. Where to go to Wow, the stadium? you need a bunch of ingredients for the eating competition, right? Thought we'd give you some help. What do you mean by stadium? Oh, and you were right about the fruit. Paimon tried one, and it was one of the sweetest, juiciest pieces of fruit Paimon has ever had. You must sell out every time. Also, Paimon tried one of the mushrooms too. In a weird way, it really did taste like a fruit. We Paimon should call told them me is like, berry shrooms. I don't know, but it improved a little bit, but I don't know, it still feel like goofy ass thing. Well, Paimon had multiple nations worth of good food to refine her palate. Her taste buds never lie. Well, thanks to your help, we can call it early today. Oh, I promised you a meal, didn't I? I'll be right back. Don't tell me अभी ये इतना सारा बर्गर उठा के लेके आएगी पटक. I'm not the greatest cook, so it's nothing special. Still, high-quality ingredients are hard to mess up. Don't sell yourself short. It looks great. Paimon can smell the umami from here. है. Whoa! This is completely different from the raw taste. I'm glad. This kind of mushroom is a favorite in the tribe, but it's not well known outside कहाँ the से cliffs of mushroom दिख रहा है? Wuthering. Actually, we're hoping to use the upcoming competition to introduce it Where to the a wider pyro icon audience. is. Okay. Uncle Okay. Atoli has been coming up with new recipes give like me a there's moment. no tomorrow. Hey, you two should sign up. Only if you want to, of course. Oh, you mean the epic feast showdown? Yeah, Paimon would love to sign up. She might not. We do already very know who's well, going to though. win this
I mean, the tournament. Don't worry. You can tap out at any time. Nothing goes to waste. I'll take care of anything you can't finish. देख रहे पकड़ Wait, aren't you competing too? Oh, then Paimon doesn't stand a chance. lol जल्दी You never realize know हुआ इसे until you try. Oh, besides, from what I just saw, it looks like you can hold your own. Well, anyway, winning isn't the point. Just think of it as an opportunity to try our local delicacies. Oh, good point. Nice! Then let's sign up together. Time for Paimon to show these people what she's made of. ले तेरा में क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गई शॉर्ट क्वेस्ट ही है इतनी सी क्वेस्ट मिली है पता नहीं कौन सा है हैं अच्छा ये उम्र वाली है सॉरी So, where the pyro archon is, okay. Let's see, what do we have here? What now? ले इंजीनियर है यहाँ पे क्या कर रही है शाना बहुत ही शानी बन रही है ले 5 मच्छी पकड़ाई है इसने अरे कहाँ गई लॉल ले बेटी So what now Gwen? I'm here but I don't see any new thing. Pyro Archon, let's sit together. The top of throne? You mean up there? अरे क्या हो रहा है? What's wrong with her? Rev the engines. हाँ कैमरा एंगल ना पूरा ये कर दो तुम Okay, what now? I mean always all away to the top. What? Drill me, I have to climb all the way up there. Rise like smoke. Okay. But I don't see anything over here. Why are we here again?
Is there any chest or something? I don't see any chest or anything. Was supposed to be a chest there. Oh, I already took that chest. Let's ride. Okay, now we are all the way up here. वो चेस्ट तो बेटी मैंने पहले ही लूट लिया कब का. I think this thing is 100% right now, right? No, it's 94%. They're still missing some basic और पता नहीं कौन सी चेस्ट है दूसरी वो मिस कर रहे हैं बस. बाकी सब तो 100% है हम. ऐसे तैरते हुए जाएंगे नीचे. Yes, I just told you I already took that chest. निपटा लिया मैंने वो. Can my character die if I just jump into the flames? No, I wouldn't be able to jump inside that thing. Watch out! Shana engineer. So let's continue with this thing. Watch out! Let's see now. Oh, hey, you're here. It's been a while. When Varessa told me you signed up for the Epic Feast Showdown, I could barely believe it. कौन ही Sounds believe like करेगा Varessa भाई? might finally be in for a challenge this year. Honestly, I'm not even that good. What's wrong? Sounds like you're still half asleep. Just, hungry. It's competition day, so gotta show up with an empty stomach. Not much longer, Varessa. Atoli's firing up the ovens as we speak. Got it. I can wait. Don't tell me बेहोश हो जाएगी वो. About the competition, usually you have to pay for the food if you don't finish. But when I heard you two were coming, I talked to Atoli and we agreed to waive your expenses. Really? So we get to eat for free? Lol. Awesome! Now we can just take it easy and box up whatever we don't finish! Please, it's our pleasure. You've done so much for Natland. Just think of it as a small token of gratitude. When the Abyss invaded, we weren't hit with large waves of monsters. ठीक है. But the volcano became unusually active. As the Guardians of Tolan, we couldn't stand by and do nothing, so we immediately dispatched a team to the summit. Varessa was a key member of that team. Varessa? हो गई वो.
Oh, right. I thought you already Yes, passed I was out. there. I Hello, brought bhai. so Hello, many what's up, Source Sachin? crackers with me that day. Yeah, brother. Welcome to live stream. Sorry, not the point. There were abyss tumors all around the summit, agitating the magma and spawning all kinds of Son monsters. Goku, welcome back, Son Goku. But once the How you Pyro doing, bro? Archon did her thing, we were able to smash them to smithereens. Looking back on it, the goal was probably to hold us up so we couldn't send reinforcements to the areas around the stadium. Good point. Your tribe must be full of great warriors with all the training you do. The Abyss really is a cunning enemy. Oh, and you mentioned Lag to something nahi raha. about the Guardians of Tolan? What does that mean? ऐसा कौन That हंसता है is भाई? a duty our people have held for generations. The volcano is very important to us. It brings disaster, but also opportunity. Our people Do you know rose to how the does challenge of capturing living radiant in work? this environment. Yes, I And think in I know about return, that thing. we get fertile soil and Basically, a thriving hold on. ecosystem. Basically, that how that thing work is you have to lose your 50-50 like back to back 3 to 4 times. Like for example, you have 3 banners back to back, like Nevilet, Kazuha, Raiden, and something else. Warisa. Let's consider this banner thing. So thing is like you are pulling for a Nevilet, right? Then you will lose your 50-50 and got something else. Then now you have your Nevilet guaranteed, right? So what do? You go ahead, I mean, purchase all these primo gems and whatever that thing is, or you already have a lot of primo gems. You pull your guaranteed Nevilet. This counts for 1, okay? You already lost your 50-50 one time. Then same thing happened on your Kazuha's banner. You pull for Kazuha, but you somehow lose to any random 5-star character. I mean, standard character. Then it counts for, I think third or fourth is a guaranteed thing. So after that, you pull again for your Kazuha, then you get your Kazuha, then you pull for Raiden. Again, you lose your 50-50, but now after you pull for your guaranteed Raiden, the next 5-star, the losing 5-star is like turned into your capturing radius thing, and you will get your next limited banner thing as a guaranteed thing. At least that's how it works, or maybe that's how I think this should work. Did you know Paimon's 1000% connected to the moons? Yeah, I heard about that theory, and I'm a little bit excited. But let's see how the story goes up. That's right. The Natlanese are never ones to shy away from a challenge. Although, whenever we spot unusual volcanic activity, we always report it to the stadium. Oh, so there's a lot more You to have this lost place than good 250 food, huh? continuously. Okay, so you now have a little bit chance to get your next 5-star as a captured radiant 5-star, but it's not guaranteed yet. After you lose like 3rd or 4th time, you will get the next one guaranteed. You're like building up your PT right now for that capturing radiance. So consider this like you need like 4 PT. Okay, the 4th one is guaranteed if I'm not wrong, and you are at 2 right now. So if you get lucky, you might be able to get your hands on capturing radiance, because it works like 25%. Let's just calculate this as a 25%. Your first loss is 25%, your second loss is 50%, your third loss is 75%, and your fourth loss is like 100%. So you are right now at 50%. So you might be able to get your next 5-star as a capturing radius, or maybe another loss and get to like 75%. Who knows?
I think this should work. If we put up like this, each lost back to back lost 5-star. I mean banner loss considered as 25%. Then it works perfectly. I think the fourth one is guaranteed. I mean, you won't lose your 54th time. Third time you have some chance to get your but I think I'm not sure, but does this I mean, winning any 50-50s break that thing, or just keeps the biddy? I'm not sure about that. I think what? Paimon's one of the moon sister, but she shrank. Yeah, maybe she lost her power just like Nahida. Who knows? It could be anything. Or she's just like a fragment of the main moon sister thing. Hold on. Where did Veressa go? Wasn't she just here? नीचे तो ना गिर गई वो? I just saw her leave. I thought someone must have called for her. My guess is that she followed the scent of the food straight to the kitchen. बताओ. बुक्कड़. Let's go check on her. Paimon understands the torture of an empty stomach better than anyone. हाँ तू तो I'll समझेगी. lead the way. Oh, that smell. So delicious. Look at her. Juicy mushrooms, melted cheese, mouth-watering steak. Ah, look who it is. I thought I felt an intense energy around here. I know better than to get between you and your next meal. The food just needs a few more minutes. Here, this should tide you over in the meantime. Wait, is this priest meat stew? Thank you, Uncle Atoli! बताओ. अब उसकी जान में जान आई. You really did head straight for the kitchen. What's up? You seemed lost in your own world just now. Oh, it's you. Sorry. I completely spaced out just now. The next thing I knew, I was all the way over here with a bowl of stew in my hands. नहीं मैंने स्लीप वॉकिंग तो सुना है, बट ये लाइक Don't worry about it. हंगर वॉकिंग पहली I बार think देख we रहा can हूँ. all guess what happened. Prep took longer than usual, so I had to push back the competition. Sorry for making you wait, Veressa, especially on an empty stomach. No worries, Uncle Atoli. Your delicious soup fixed me right up. Oh, that sounds more like the Veressa we know. I become completely useless when I'm hungry. I really wanted to focus on the conversation back there, but... Yeah, I know you don't mean Simon, but Paimon. That's perfectly normal. It takes a lot of energy to train the way you do, so you need more food to make up for it. You two know what I mean, right? Try to do too much on an empty stomach, and you end up feeling weak and lightheaded. Oh boy, Paimon's been there before. अच्छा बेटे. So, when is the competition supposed to start? Not sure I can wait much longer. One sec. I'll go check. We're all set. Time to gather the contestants, Akatl. The showdown is about to begin. अबे अभी तो बोला था इसने कि डिले करवाया था इसने. Let's head to the venue. The food will be brought out shortly. There is an animal collider I'm so on ready top to of dig in. Varesa's house. Are you sure? Hold on, बैठना तो है मुझे.
Okay, what's this? 29 March. Here's to a life where the तो drinks ये तो keep हो भी गया flowing खत्म. and the mora keeps rolling. तो प्रोडिजी इंडिया आज शाम को हो रहा है ना लॉन्च 6 घंटे में. अच्छा कम्युनिटी मीटिंग 6 घंटे में है और ऑफिशियल लॉन्च 7 घंटे में. ठीक है. ओके ओके ओके. इस बार मैं एक्चुअली एक मोटे कॉप कैरेक्टर का सोच रहा हूँ रोल प्ले के लिए. I've read almost every novel from बट आई Yai एम नॉट Publishing श्योर House. कैसा रहेगा वो. Pretty normal, right? चलो. क्योंकि मुझे वो पेट दिखाई नहीं दिया मोटा कॉप बोला. अबे ये भी खाएगी क्या इतना सारा? It smells so good. पाइमॉन दे दिया तो. Veressa had the right idea. It's definitely worth the wait. Yeah, we could maybe finish one portion between the two of us. And even that's a stretch. But one portion each? There's no Lol. chance. Time to dig in. Thanks for the food, Uncle Toli. Whoa. Hold on. Veressa's plate looks completely different Abbe? than ours. I forgot to mention, the competition actually has 2 levels. The regular challenge and the Veressa challenge. The बताओ. Veressa challenge is only for people who have completed the regular challenge in the past. It's named after Veressa because, well, so far, she's the only one who's been able to finish it. You're kidding. You had to invent a whole new challenge just for her? भाई उसको खाना भी तो उतना ही Believe लगता me, है. if Veressa competed in the same class as everyone else, the winner would be decided before the competition even started. What's the fun in that? Only बात one तो other सही है. person has come close to beating the Veressa challenge. And that would be the Pyro Archon herself. Seriously? Of course. She breezed through the normal level, but the Veressa challenge was still too much, even for her. Lol. Back then, it was all part of an investigation. You see, the Pyro Archon covers all expenses at the Weary Inn the night before the pilgrimage. And each time, Veressa's tab would show several dozen people's worth of food for a single person. अरे The speaker's chamber thought something had to be wrong. Maybe there was a mistake in the accounts, or someone was trying to defraud the Archon. But once the Archon finally saw Veressa's appetite in action, that was that. हाँ देखने के बाद तो उसकी भी बत्ती गुल हुई होगी. Okay, so भाई है क्या? you're saying Malika had these portions and she just breezed through? मतलब उसका भी एपेटाइट बड़ा है. You're right. Let's go. Paimon's gonna defend her honor with everything she's got. अरे अरे अरे. Whoa. Tender, juicy, grilled to perfection. It's delicious. Oh, you gotta try this one too, Traveler. It's amazing. Oh, and this. उसका खत्म भी हो गया भाई. And this one is. लॉल. तो ये खाते हुए दिखाओ ना भाई. That's it. Paimon taps out. फट गई पाइमॉन के. All this time. And it doesn't look like we've made any progress. Oh, Paimon's ready to throw in the towel. Okay, Paimon's tried as hard as she could, but this enemy is too strong. You know what?
फट गई There भाई should बन be गई. a Paimon challenge. Paimon's smaller than the rest of you. It's no fair for her portion to be the same. बात तो सही है. Let's hear it for Veressa, who has once again completed the challenge. And with a 10% increase in portion size, it's a new personal best. बताओ उसमें भी 10% बेस्ट है उसका. बाकी लोग तो ऐसे ही ठस हो गए. Well done, Veressa. Amazing job! Oh, it's nothing. Uncle Atoli's food is just too good. I couldn't stop myself. You actually finished it? Jeez, are you okay? Huh? Why wouldn't I be? You don't feel bloated? Or like you're gonna throw up? Oh, Paimon's so full it feels like she's gonna sink. Oh, nope. I feel good अरे actually. भाई. Satisfied, you know? Thanks. This is my specialty after all. Not that it's good for anything outside these competitions. Eating is her specialty भाई. If I'm honest, I'd rather be like you or Kochi-an-san. A hero brave enough to stand against the abyss. Aw, A don't worry, hero Veressa. eats a lot. For someone as talented as you, it's only a matter of time before you shine in the arena. Ian-san, did you beat the challenge too? Of course. The regular challenge is easy for me. I've attempted the Veressa challenge a few times too, but never even came close. Okay, there has to ये be देखो, ये more भी to भूख this कर than निकले. just appetite. Is there some kind of trick? By the end, it was like the meat turned into one big greasy blob and it was so hard to keep going. Oh, that's when you balance it out with some mushrooms. The ones from my orchard. Well, that's what I did anyway. As soon as the food came out, I set a few mushrooms to the side so they wouldn't soak up too much oil. Or get too mushy. That way, you have something fresh and fruity to balance it out. Oh, अबे तो so फिर भी that's पेट में the जाएगा कितना? secret. Use the mushrooms to cut through the heaviness. That's right. You tried them yourselves, remember? If it tastes like a fruit, might as well use it like one. I think more people from outside the tribe would beat the challenge if they knew about that mushroom. Ian-san, some of the contestants are looking for you. Something about being ready to train? They want to बताओ. exercise. खाने के लिए कौन एक्सरसाइज करता है भाई? Sorry, everyone. I should intervene. Yeah, go tell them to take it easy. Well, how did everyone do, Uncle Atoli? Almost half finished the regular challenge. I believe that's a record. Either the contestants are getting more experienced, or my cooking was extra good this time. Everything was delicious. कुछ भी. Especially when it first came out all hot and steaming. Thank you. When cooked at high heat, that mushroom has a special fragrance that really brings out the flavor of the other ingredients. Oh, and since you're new here, I should mention something else about that mushroom. क्या? It's an excellent addition to any dish, but there are actually two varieties. Red, which is the most common, and green. There's not much to note about the red ones. Sell them, eat them, do whatever you want. But if you see a green one, it must be picked and eaten right away. ऐसा क्यों है वो? Huh? Why's that? That's just what a scholar from Sumeru said when the orchard first opened. No one knows the reason. We just do as we're told. Whenever a green mushroom pops up in the orchard, I pick it and eat it. The flavor is identical to the red ones. Okay, because that's not weirdly specific at all. Well, of course. Who wouldn't be intrigued by something like that? But curiosity isn't always a good thing, right? और क्या खाएगा नहीं पड़ गया तो क्या होगा भाई? Oh, by the way, Veressa, I'm almost out of red mushrooms. Could you run to the orchard and grab some more for me? Of course, Uncle Atoli. I'm on it. Wanna देख come भाई with उसको me फ्री too? में खाना दिया तो काम तो करवाएगा वो उससे. What do you think, Traveler? Paimon wouldn't mind working off some of that food. Paimon will take that as a yes. All right, let's go. Thanks for तो the मुंडी food, हिला है Atoli. यस तो बोला भाई. और कितनी My मुंडी pleasure. हिलाएगी वो? But try to finish it all next time. Let's ride. क्या हो गया भाई? फेंक दी. Try and stop me.
after that meal, I'm ready to tackle anything. Oh, something on your mind? Is it what Uncle Atoli said about the green mushrooms? Don't worry. He can be a bit dramatic sometimes. The green mushrooms don't appear that often. Besides, I check the orchard every day, and if I see one, I eat it. If anything, Seriously? I wish there were more around here. Means more free mushrooms for me. Wait, is that one right there? Huh. Talk about a coincidence. लग तो नहीं रहा है मुझे. See? There's nothing special about it except the color. Give me 1 sec. I'll start a fire and grill it right up. Paimon's gonna pass on this one. She's way too stuffed अभी from भी उसके earlier. अंदर खाने की इच्छा है. इतना नाश्ता ठूस के आई है कंपटीशन में तब भी. You mean why we have to pick and eat the green mushrooms right away? To be honest, I'm curious too. The scholar looked really serious when he said it, but he never explained the reason behind it. Uncle Atoli has a point, though. Curiosity can be a bad thing. If we stop doing what the scholar said, something terrible could happen. You could look into it at least. That's what an adventurer would do. Yeah, but अब पॉइजनस my निकलेगा तो tribe क्या is more करेगी? important. लंगूर. I love everything about this place. Maintaining the status quo is good enough for me. I know the truth is important too, but I don't have the right to make a decision that could put the people around me in danger. भैंस के जैसे In other words, कान में घंटा बांध के बैठी. deep down, I guess I'm just scared. Command the truth? Yeah, we don't have to stop following the scholar's orders. We can start by gathering information. You have a point. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इसे हम You know, वो खिलवा के She reminded me मानेंगे. of another hero from our tribe. Her name was Fiatena. Just like you, she was full of courage and never stopped challenging and exploring the unknown. She's my idol. Actually, could you give me a moment? All I need is 3 seconds. Lady Fiatena, lend me your courage. 3, 2, कर क्या रही है? 1. You're right. I can't keep running from the truth. Eh? I want to command it, just like you said. So, where should we start with the investigation? You probably have a bunch of experience. Oh, the green mushroom, you mean? The taste is the same as the red ones. There's nothing special there. Well, the traveler is a lot more perceptive than most people. She should at least give it a try. Oh, I खिलवाओ उसे see. भाई खिलवाओ चलो. Well, then I'll grill some up right away. So, notice anything, traveler? Just like Varesha said. Guess it was the same for all of us. इतना चमक क्यों रहा है वो फूड? Finally, a worthy devotee after all this time. Fascinating. ये क्या बकरी बनती है भाई? Who said that? No need for alarm. There is only one among you who piqued my interest, and that is the one with golden hair. Well, seeing as you all appear to be acquainted, I allowed the rest of you to hear my voice as well. Now, I shall grant you all the honor of becoming my first subjects in this era. Now, you were the ones who wanted to learn more about my origins. I merely granted your wish. Origins? Wait, you're the green mushroom? So you do know how to use your brain, young one. You'll excuse me if I have no interest in you, craven and dull-witted as you usually seem. लोल भाई. Watch it, buddy. खड़े खड़े भेज दी थी. Let me remind you, it was your own curiosity that started all of this. I see no reason for me to stand down. I only granted you this audience because I saw potential in you. I am the Sage Lord of Fungi. Serving me is a great honor, as well as a once-in-a-lifetime opportunity. बेटा चमाट खाएगी तू. Sage Lord? Good
one. Did you come up with that yourself? You mock my name? All you do is make a mockery of your own taste. Of course, the sage lord of fungi is too dignified for petty arguments with lesser organisms. Sure doesn't sound like it. That's enough out of you. What's wrong with you humans? You should be full of reverence at this point. In that case, I don't know what went wrong, but you lack the trust and worship to be my subjects. So we shall have to table that for the time being. However, I am willing to share my sagely knowledge with you. I have all the answers you seek. क्या फेंक रहा है? As with all seekers of said knowledge, all you have to do is prove your sincerity, and we shall see if you're worthy. Look! More green mushrooms right in front of us! These clones are my most loyal subjects, as well as the keepers of my secrets. If you want answers, then gather your wits and search for clues. I shall await your summons. It might be advisable to brush up on your devotion in the meantime. भाई जिस प्रकार से हंस रही है ना वो, मैं बता रहा हूँ चप्पल खाएगी वो। Enough of that racket. Talking in our heads without permission, spewing a bunch of nonsense. Even a How is better than him. और So, do you think what he said was true? About being the sage lord of fungi and all that? Maybe, but most of it sounded like hot air to Paimon. वही True. That conversation in our heads definitely was real. And it proves these mushrooms aren't regular mushrooms at all. Something fishy is going on. सक्सेसफुली कनेक्टेड। अब क्या आ रहा है? पता नहीं बीच में क्या हो जाता है इसे। Okay, so this one is red. Ah! Fungus! It turned into a fungus! In that land of all places! So, this is one of his subjects? Well, it's kinda cute. Bull warrior compliment! Much appreciate! No! Bull warrior natural enemy! Eat! Must resist! Careful, Veressa! This is a kind of monster from Sumeru. Even though it looks cute, it can still attack you! A monster? Aw, that's too bad. I was hoping we could be friends.
अभी भी कनेक्शन प्रॉब्लम है. बहुत है कनेक्शन प्रॉब्लम. आज कुछ डाउन नेटवर्क का सीन चल रहा है क्या? होल्ड ऑन, लेट मी ओपन अ टिकट. Talk to advisor. अरे ओके, आईएसपी वाले से बाद में फोन करूंगा. There's some issues going on with my. पता नहीं आज क्या है, अलग ही फील हो रहा. Hello, is anybody there? Yes, I had some connection problems, but I'm back now. Okay, so this one is red. Ah! Fungus! It turned into a fungus! In that land of all places! So this is one of his subjects? Well, it's kind of cute. हाँ, अभी तो कूदेगी उसके ऊपर, पता है मुझे. Bull warrior compliment! Much appreciate! Lol. No! Bull warrior natural enemy! Eat! Must resist! अरे Careful, Varessa! This is a kind of monster from Sumeru. Even though it looks cute, it can still attack you! A monster? Aw, that's too bad. I was hoping we could be friends. Lol. Mercy! Mercy! अरे 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 अरे. Food is फट गई. secret! Everything else, waste! That all I know. Promise! It turned back into a normal mushroom. What's going on? मुझे भी नहीं पता. That food is sacred? Well, that's a whole bunch of nothing. Let's go look somewhere else. ग्रीन मशरूम कौन है फिर? वो देखिए तुम. Oh, a green mushroom, and it turned into a Hopefully, fungus. Nice try, अब but कुछ you're not प्रॉब्लम scaring नहीं होगा. Paimon with that one twice. Okay, let's go on the initiative. Hey, you! What's the whole food is sacred thing about? As our Sage Lord stated, you must demonstrate your wits to receive the answers you seek. That means I should be the one asking the questions, not you. बेटा चमाट खाएगी तू. Okay, so it turns out this one can talk. Fine. What do we have to do? Solve a riddle or something? Riddle? Oh, I'm not good at that. Could you, give us an easy one? That sounds like a problem for your friends. Besides, did I say this was up for negotiation? नीचे वाला चूज करो. दे बेटी रिडल. Enough chatter. Time for my question. Why are all the mushrooms in this orchard willing to become the subjects of the Sage Lord? I don't know. Man, how are we supposed to know? Because you're his clones, right? I remember him saying something like that. Alas, no wits in sight. The answer could never be that simple. He's a fun guy. Seriously. What? How did you get that so fast? Oh, it's that kind of riddle. Sumeru mushrooms! Of course! Paimon can't believe she didn't think of this possibility. सस्ते जोक. साइनो के सस्ते जोक्स. Does that mean everyone in Sumeru is into puns? Huh. Is it because the people are so clever? No, we just, have a lot of experience with these kinds of jokes. Well, since you have I know proven you your Saino के wits, jokes.
I will now answer your question. The act of eating is not only a physical necessity, but also a sacred ritual. Mushrooms like us are the Sage Lord's intermediaries. Incinerating our flesh forges a spiritual connection between you and the Sage Lord himself. Oh, so that's why he could speak to us in our heads. So you're saying if we want to talk to him again, all we have to do is eat more mushrooms? No, wait, don't do regular mushroom! Oh, too late. And all we have Paimon is की another voice तो cryptic definitely message. improve हुआ. Well, if eating is a sacred ritual, maybe we need to perform some kind of ceremony with special tools or something. अब वो कौन सी tool लाएगी तू? Marissa, let's try and ask the other mushrooms. Oh, but we should probably pick this one first since it's a green mushroom. Hey, there are two fungi over there. Looks like they're discussing something. Take a look at comments. Okay. There's one person watching you and like 14 likes. I don't know. I had some connection issues right now. But साला ठीक है मुझे लगा गिर गया ये. It happens sometimes. It's fine. Have you figured out how I'm you're used to going that to thing test now. the humans? Of course! Any random question should do the trick. They So don't look there is very a- smart to me. Yeah. Animo collide. What? On Veresa's house, on top of her house. Okay, I will check that out. Wow, cool! You greencaps are so wise. Just like our Siege Lord. Huh, I'm so jealous. Animoculus. That's what I call that thing. It's all progressing That as is expected. Pyroculus. I know exactly what they're going to ask. कुल है उनके कुल जैसे हमारे कुल देवता वगैरह रहते हैं ना वैसे इस पायरो को देवताओं के भी कुल वगैरह हैं वो. Oculus. Oh, please, please tell us how to conduct the ceremony. And I shall respond. Nothing in life comes for free. You have I two know पर मुझे लग रहा है कि ये दोनों चप्पल Answer से a question सूटने वाला है about the जैसे stars and फटाफट moon फटाफट above, पड़ेंगे इनको चप्पलें. or the dark abyss below. कौन सा डार्क अबीस बिलो? Ew! And they'll say, no, I'm stumped. I can't think anymore, or my cap will explode into spores. ये स्टोरी है ना ये स्टोरी मुझे एक गेमर के हिसाब से कम और एक छोटे 5 साल के बच्चे के हिसाब से ज्यादा लग रही है. They're humans, Like literally. idiot. They don't have caps or spores. मजा ना आ रहा है इसमें ज्यादा. All right. Duh. And then I'll say, ha, you can't even answer the most basic of basic questions? Come back after you've studied for a few more decades. Ha! Yeah! A few more decades. Huh. Of course, they're so dense, it might actually take them that long to realize that. If eating is a ritual, then obviously, the ceremony is the cooking. I mean, obviously it's the cooking. मजा ना आ रहा कुछ. Who goes there? And you think we're the dense ones? Look in the mirror, buddy. A floating pale organism out of nowhere. My cap almost burst into spores. No, wait, don't disappear! At least explain yourselves first! So, we passed the test? Where's the sense of accomplishment? So much for gathering our wits. We Nah. didn't have to use our brains at all. Oh well. ये जम ना रही है. Is the Sage Lord At of least Fungi wants us to use cooking to establish a Natlan stronger कैरेक्टर पे तो mental जचन आ रही है connection with स्टोरी. him. Definitely. That sounds right. Uncle Atoli did say,
When you cook this mushroom, the higher the heat, the better the fragrance. I mean, food वगैरह का ठीक है. It's That was all the case when you grilled them in the about that orchard food too. thing. Heat really वगैरह. does release their घंटा गाड़ी. flavor. लेकिन इस स्पेसिफिक पैच में वो जम नहीं रही है. फाउंटेन वाले पैच में अगर ये होता ना तो थोड़ा सोच भी सकते थे. फाउंटेन या फिर सुमे रुके इसमें. इस पैच में नेटलैंड पैच में ना कुछ जम नहीं रही है. लिंक बैठ नहीं रही है दोनों की. Okay, let's give it a try. Definitely. But we should probably explain the situation to Uncle Akadal and the rest of the tribe first. Good call. It's best for everyone to be prepared. तुम में से कितने लोगों को ये फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा अलग लग रहा है क्वेस्ट? मतलब मजा नहीं आ रहा है कुछ इसमें. ये 180 मीटर वापस सीधा टेलीपोर्ट मारो ना फिर. कोको आज मेरे गुड बॉय. ये ले खाना पकाओ कंपटीशन. इनका अभी तक चल ही रहा है क्या? Huh. क्या बकरी बनती है? It felt pretty normal in the moment, but hearing it back does sound kind of ridiculous. So, the mushrooms in the orchard are sentient. What a remarkable discovery! Yeah, without your investigation, who knows what could have happened? अबे तो आज तक किसी ने ट्राई ही नहीं किया क्या तुम्हारी ट्राइब में मशरूम खाने का? अजब लंगूर हो भाई. What a relief. I was worried it sounded like I lost my marbles. It does sound far-fetched. After all, none of us have ever spoken to a mushroom. But we know you're not one to lie, Varessa. Besides, the origin of the green mushrooms has always been a mystery to us. Thanks to you, we now know something sinister could be going on. So, we should do our part to help. Yeah, just let me know if there's anything I can do. Wow, that didn't take much convincing. Oh, wait! You said the mushrooms needed to be cooked at high heat, right? I can do that for you right now. I'll be quick. ये खड़े-खड़े बनाएगा क्या ये? All right, I'm back. I used cast iron, so it should be hot enough. Whoa, it smells What? delicious! Are you serious? I'm hungry again. Well, I mean, here goes seriously? nothing. Wait, that's his voice! Looks like you stumbled upon the right path. But this temperature does not demonstrate even a fraction of the sincerity I require. Did you really think some common stove could generate enough heat to earn the acknowledgement of the Sage Lord? Humans are such a क्या बकचोदी है भाई ये? You can solve my riddles when the answers are handed to you on a silver platter. But as soon as there are no more hints, not a shred of intelligence in sight. Do try and use your brain this time. क्वेस्ट डिजाइन की गई ना मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 5 साल के बच्चे Did you hear the voice? इतना अजीब और ये लग रहा है मुझे अभी. The Sage Lord of Fungi said the heat's still not high enough. Sage Lord of Nitpicking, more like. Not high enough, huh? I guess that means we need a more powerful source of heat. Attention, everyone! We need items that can generate intense heat. Anything you can find. I'll see what I can do. फायरो ट्रैवलर ही यूज कर Leave it to लो. me. We should take a look too. तू क्या करेगी उसमें? Definitely. What about
super familiar with this area, though. Do you have any ideas? नहीं. Nothing concrete, but we could check around the volcano. अरे लंगूर. It spews out all kinds of stuff. Maybe there's something we can use. Awesome! Let's go! Paimon's gonna find something scorching hot and then throw it at that stupid mushroom's face! उठाएगी कैसे? दिमाग तो है ही नहीं भाई पाइमॉन के पास. कहाँ जाना कहाँ? Hey, there should be some avatars of lava somewhere along this path. Their cores are really hot. It might be just what we need. उठाएगी कैसे? सवाल तो वही है ना. Everyone jumped to help us like How are you that? going to pick that up? It seems like your tribe has been suspicious of the green mushrooms for a while. Yeah, but without you, we would have never gotten this far. I mean, tons of people have tried that mushroom without a weird What voice happened, talking Gwen? in their head. Right. I'm not So, ignoring you. Even if you wanted to investigate, you had nowhere to start. Yeah, this opportunity was a long time coming. I'm talking with you. Plus, I mean, the Sage Lord's arrogant attitude I replied to your definitely comments. triggered my tribe's competitive spirit. Verissa doesn't seem competitive most of the time, though. Outside of training and fighting monsters, at least. Yeah, well, I don't really like fighting or competing, to be honest. Simple day-to-day happiness is what matters to me. Still, I've learned a lot from Kojian-san. She taught me that strength is a means rather than an end. We I'm get just stronger so we can use our laughing on strength this when it quest counts. line. I mean, Like during the Abyss invasion. Having the training to master this my quest, vision meant whatever this that I could tribal do quest something to is, stop it. it does not suit the theme of Natlanic theme, you know. That's what I'm thinking right now. I'm actually laughing. Maybe it feels so weird that this look like this story, especially the little story we are doing now, is like made for some 5-year-old kid who is like obsessed with food and all that thing. I mean, it's fine to do to show a character who is actually obsessed with food and all that thing, but this specific quest is like, it feels like they just went too far into this thing. So, no matter how scared I feel, I know I have to be brave. Because people are counting on Last time I said there is an Varissa's house. Okay. Yeah, I know. I even told you that I will go there and check it out. It's a work in progress. Okay, I can let's only hope check that out. One day I can be as But brave where as is Lady Varissa's Fiatena. house? All right, we should keep looking. Running late again. Rise with the sun! तो ये मटेरियल सब नहीं दे रहा है, वो अलग से पीछे पड़ गए. डैमेज थोड़ा कम है. हाँ पोपो ना इकडे ये, चल ये इकडे ये. पोको गुड बॉयज ना, चलो गुड बॉय आजा. ये बोर्ड ऐसे नहीं. Okay, now where is the house here? Let me just Google that thing.
Not able to see. Hold on. Let me just get rid of this guy. Finally, we are done with that music. Now, where can I see her house? Guess I have to Google that thing. This is one gallery. Let me see. Maybe there's something in her gallery. Nope. Well, I'm not sure about that, but let's continue with this thing first. Hey, there should be some app. Their cores are really hot. You know. Yeah, but Yeah. Right. yeah. ये This वापस repeat क्यों बता रहा है मुझे? Verissa doesn't seem. Yeah, well, I don't really like. Still, I've learned we get stronger. So no matter how scared I feel, I know I have. Think. All right. We can play as Verissa. Let's roll. Oh, looks like we. Uh-oh! I'm falling wrong! That avatar of lava pushed it down. Come on, let's charge. Charge? Charge! Holy shit! That feels like Done and dusted. fast-paced This core plunging should thing. be perfect. Look, the phlogiston inside it is still active. Oh, let's see! Woo! Hot! A few more chunks like this, and we should be good. Come on, let's keep heading up. Varissa's house is her uncle's house. Man, I want that Shanyon skin. That looks looking good. What do you mean, man? There is a Shanyon skin? Oh, you mean to say that one in the thumbnail and other thing. See now. Careful! 3 avatars of lava ahead. Incoming! Headbutt! Kapow! Charge! Holy shit, that looks pretty fantastic. Too strong! No, she's going to die. Late again. Can't Oh, she's dead. stand. Losing. Oh no, not good! The volcano is acting up again! What do we need to do now? We just need to dodge all these things, right? Seriously? Try and stop me! You have to do all that thing. In? Done and dusted. This core should be perfect. Look, the Man, phlogiston she's inside good it is and still killed her. active. Yeah, exactly.
I was not paying attention to her A few health more bar. chunks like. Time to roll. Careful. 3 avatars of lava ahead. Teamwork is strength. I'm a rock. Pew-pew. Lolling. Eat Papa. Sayonara special. Charge. Okay, now that feels good. Volcano is acting up again. What is that? What is that It thing? looks like a giant weasel thief. Is there a Great Toland weasel thief or something? We call it a furnace shell mountain weasel. It's very aggressive, so be careful. Heads up! It's Justice O'Clock! Ultimate Flying Kick! Headbutt! Well, that was fast. A bunch of seeing eyes, and this thing the weasel used to spew out fire. Yeah, her gameplay is goofy as fuck, but I think that's its back it feels armor. so satisfying when It shoots out you're phlogiston, like so it can plunging pretty back much to attack back from all successfully. directions. My dad told me about them once. Creatures that live in the volcano. I can't believe we actually ran into one. This piece of armor might produce even higher temperatures than the seeing eyes. We'll get those mushrooms super hot this time. Oh, well, even though I don't like fighting, sometimes you don't have a choice. So, I've tried to figure out a bunch of different ways to get myself in the zone. For example, I've You read know, a it lot might of stories about heroes, be. and I my might favorite actually hero has pull always been Varesa. Vietana. I'm not Vietana's sure. most iconic feature was her mask. I kind of So like I that decided plunging to make thing. one just like hers. So now, whenever I wear the mask, it's like there's a little piece of her with me. If I want to honor her legacy, I have no choice but to be brave. At the same time, though, I guess it's kind of like a crutch. But what Kind of like what type of team should hiding I behind her play? strength. I mean, I already have a overloaded team with C6 Chevres, C2 what was her name again? Chlorine. Yeah, I have C2 Chlorine, C6 Chevres, C1 Mawika, and C1 Fischl, I believe. That could I can actually replace that C1 Fischl with C4 Yansan. Oh, you really think so? Really? It's. I don't know what else she is good at. I mean, I feel like I don't know about her I teams. need to take it off one day and face things I alone. still have to test that out. But the longer I put off taking that step, the more impossible it feels. I don't know if I have it in me. Yeah, you had the courage to make that decision. And that's what adventuring is all about. You pulled for not Fighting Yan. is just a small part of it. I pulled for Shanyan. Because I need Shanyan for my Shao's team. Just take your time. It's not a race. Thanks for believing No, in I me, haven't too. pulled for Varesa I've learned yet. so much. But I'm thinking I might And I won't I give might up. actually pull Not for until I can Varesa. face things on my own. After looking at this play style, After that pep it talk, piqued my I feel like curiosity my a little appetite is bit. back in full force. You're hungry already? Paimon hasn't even finished digesting her last meal. But again, Come on, her let's weapon head back make a to the big tribe. difference for her, so We'll I earn don't that have that mushroom's much recognition this primogems time for to sure. pull her and her weapon. I mean, you can see my characters over here. I pulled for Shanyan because she's very good and she's actually needed with my Shao's team. And I'm currently benching my Alhaitham. And I'm using Mawika with my Chlorine team. So this is my overloaded team right now. Chlorine, Mawika, and where's that Fischl? He should be right over here.
It's okay. She's here. I Official, created and the another fourth character universe is, and of found course, paradise. the Overlord Animaler. And the other team is, I mean, I used Aletham actually in this Abyss thing. But now I can actually use Shao. But for before that, I have to farm that new artifact set for Shao. So I'm thinking if I pull for Varesa now, what can she do? What can I possibly do with her in this account? She can definitely do overloaded thing because she has 66 already. But other than that, I have no idea. Yeah, that's what I think. My reason for pulling Shanyon is simple. I like to try it out like goofy thing. I'm a kind of goofy guy, you know. If you're following my stream, you know that. I definitely want to try out Mavika plunging thing. Nilu wave plunge. And Dilu plunge, of course. These characters are in my list for plunging thing. Mavika, Nilu, Dilu. Maybe I can try Ito plunge. I don't know how good he is at plunging thing, but I might actually try that thing. I also have C6 Gaming, so I can try that. Definitely Xiao is the one who is going to get a lot of benefit from Xianyan. I also have C4 Purina. She's going to buff him up. But about this character, I'm not sure. I only have like 8,500 primogems. And that's not nowhere near enough to pull for a character and her weapon, unless I'm being like super ultra lucky. Which might actually happen because this is the luckiest account I have so far. Plunge Diluc and Gaming go well with Shanyan. Yeah, they are definitely solid pick for her. I mean, her weapon is like tailor made for her. Where's the weapon name? Yeah, look at the stat. This is going to be a highest base attack stat after you get this weapon at level 90. And judging from this thing, I think the crit damage would go around 60 or something, right? Because do I have any catalyst thing? Weaponry, yeah, I do have this thing, right? 88.2%. Max HP increased by 20% once every 14 after using elemental skill gains for scorching summon. Normal attack damage by so that's not going to help her. So this could work on her, but just like as a stat state. I'm so confused right now. Not all, but I still have some of them. Like I put for Shao's thing because I was actually prepared for Shao's team. I was actually expecting Faruzan to be on this banner, so I can actually try to C6 her, but for some reason they decided to not in fuck it.
I was not expecting this banner setup. I mean, Faruzan should be on this banner. Technically, he's Animo supporter. And Shannon can be played as a DPS, but I don't know. It's just too rare for Shannon, Faruzan to appear on any other banner. And chances are like 9% or something to get her on any other banners. That's really bad. You know what? Let me just try this character again. Yeah, they added Chevres for Voresa, so maybe she's meant to be like overloaded DPS. Running late again. Get back on track. Elemental skill also have like 6-second cooldown, so that's not bad. Okay. Stop right there. You asked for right into the fire. Hey, Santana, grant me strength. Headbutt. Heads up. Hey. Okay, this feels interesting. So we just normal attacks. When I press my just left click, she does these things. So I have to include skill if I have to plunge. And what about the charge attack? Oh, okay. This feels sluggish and slow. But maybe that's just to fill up the gap. Okay, but I don't think that's good enough to pull for her. Yeah, I was thinking to pull for her, but nah. It's better to just save up and pull for some other characters. Maybe Shilonen or something. It's just tempting to pull for her because after playing like this, I kind of like that plunging playstyle, you know. And I'm a fan of plunging thing. That's the reason I have Shao on my ID. I mean, at least on this ID. We're back! And we found a bunch of stuff to use! Great! We're almost done with the preparations on our side, too. I've managed to get these iron chunks red hot. We should be good to go. Yes, Yeah, Shilonen is and since we definitely need a really upgrade high for temperatures, Movica I team. brought the best stove I could find. But And I got a bunch of calculations buckets of lava are on there, standby calculations if are we out need now, more fuel. and people are actually having good result by using C4 plus Yansan replacing Shilonen. I don't know how exactly strong that team is, but people are actually working it out, and
I don't have any idea how is that going to work because she's an electro and she's going to. I mean, she's not able to do off-field electro damage, so that's a plus point. You can do just reaction once and give the bonuses, give a lot of attack percent thing. And if you will have Sid, she's also giving some damage percent, like 25% damage bonus to Mawiga. But how is that better than having like 35% rest shred? That's what I'm thinking about. People are some theory crafter and other things are like people are telling. I mean, they have the result on their hands. I have C4 Iansa, so I'm not sure I should be replacing her or something. To replace her, I have to That get mushroom characters, started right? it, right, everyone? Disrespecting Varessa and our guest of. Yeah, we'll see what sort of Oh, excuses it can come up with this time. Thanks for the help, everyone. It really means a lot. For some reason, I'm sleepy. Maybe I'm tired of this All right, quest. let's see what we have here. Huh? The armor of a furnace shell mountain weasel? Don't tell me you went into the volcano. No, it erupted out of nowhere, and then the weasel appeared, and then, well, anyway, we got this in the end. Nah, their setup is just for one time. High Either damage, way, not for normal this is something gameplay. special. I'm not, if I'm Back not when I was wrong. training to be a chef, I I studied the see. effect of temperature on different ingredients. Your This tag kind team of armor definitely produces intense is for localized heat. Mawika's burst. It's great for Nothing fish else. because you I can get a don't nice sear on think one the side cyclic without damage is going overcooking to the be other. that high Anyway, compared let's to get her started. burst. The mushrooms are all ready So to go. all the setup should be right, let's around her go. burst. Yeah, Mawika is kind of a bursty character, you know. It's all about her burst. Whoa, the fragrance is so much more intense. And what's with this weird mist? Wait, no, something's not right. The mushroom is going to pop out. No? What just happened? Actually, I tried Jensen with and without Bennett buff, and the difference was just 200k damage. So, oh, I see. What's up with this loading thing? Where are we? Where did everyone go? I have no idea. We just showed up here. I can't see the others anymore. It looks like we are into a dream or something. Is something wrong? That's a cuddle. Chief, we don't know where we are. What? I know it's hard to see through this mist, but aren't you here at the tribe with the rest of us? No. What are you feeling? Don't tell me we are inside that food thing. Because you are the only worthy devotees, of course. बेटा चप्पल खाएगा ये. Evil jerk of a mushroom, so this is what you look like. He does look a bit more evil than the other mushrooms we met. I am no longer concerned with your insolence. On the contrary, I am satisfied with your performance. So, as promised, you shall have the answers you seek. Of course, I have a goal of my own. Let me reiterate once more. The great sage lord of fungi, that would be me, is extending you the honor of becoming my subjects. Ha! The only way anyone's serving you is on a platter. Now, don't be hasty. I would definitely pull for inadvisable Varessa to if speak she in was like absolutes. You refuse Hydro, only because you Pyro, or have any yet to other witness my miracles. elemental thing. Cherish this opportunity. But Electro is It may not like come again. Electro has like limited Tivat is reaction not a thing. peaceful place. What The you gods can wage do war with this against thing? one another. You can do like Monsters roam overload, the land. Humans live or in you can do squalor. something like Then electro charge. humanity That's it. discovered me and learned that I could grant them unlimited power to At least fell even the that's most what I think. fearsome of enemies. If we want to become strong,
We just have to eat this. Those monsters are no match for me! ये कौन And बकचोद है भाई? so, the humans worshipped me as their savior. And in return, I revealed my identity as the Sage Lord of Fungi. Fungi. You really expect us to believe that? Besides, as far as enemies go, a few puny fungi aren't that fearsome. Such arrogance! Take that back and apologize before I lose my temper. You wish! I mean, those monsters really don't look that scary. Not the kind you'd need a miracle to defeat, anyway. You insignificant mortals boast of strength? Very well. Then prove it! सस्ता म्यूजिक. Fulfill our pact! Headbutt! Well fought! You see? You ate a fair amount of my clones, and now look what you can do. Huh. My eye for subjects is as discerning as ever. Huh. Weren't we insignificant mortals just a second ago? Weird. I'll admit, you're not entirely Coco. useless, but my miracles are even greater than you can imagine. No, don't just... बग गया भाई वो बड़ा. Another cryptic one-liner and another disappearing act? It's gotta be a mushroom thing at this point. Well, what should I we just do, feel Genshin Father? is really losing their edge let's go. over the story part. I think he's Exactly trying to what tell I us a think. story, although That's I'm not exactly sure what I'm if I thinking like right the now. plot. This whole story and the mushroom thing and the food thing feels like this story is meant for like 5-year-old kid. Don't get me wrong, I usually like stories and all that thing, but this, no. I mean, this character and story should would be like fine, acceptable, only if this whole scenario and thing does not belong to Natlan part. Hear me out. If this thing was introduced back in Many Sumeru insects have a compulsion or to follow the even light. a fountain thing, and it would humans be are the like same. acceptable thing, you know? Except we call that light. Fountainian are like food expert and fabric and all other thing experts, machinery experts. They can use this sort of thing in Fontaine or even Sumeru, but in Natlan, nah. I mean, this particular thing supposed to be nation of war, right? What is a foodie or food related thing is doing here in Nation of War? Maybe now that war is over, they are just trying to balance soon things became out. humanity's faith, and with my power, created That countless could be the clones, case, but with which I could bestow upon them for an me, endless source it's of not hitting that sustenance. sweet spot, you know. Food is a scarce resource. A faith that provides for the needs of the flesh is the most practical and noble of all. And as my subjects gave themselves in service, either as civilians or warriors, I On the other rewarded them hand, with Wuthering Waves mushrooms is actually in doing proportion to great their job on contribution. stories. The After most this, I'm actually going exceptional among to them could receive play as the many new as patch. 20 I haven't touched the mushrooms new a patch yet, day. the 2.2. That's it? And What I are you already hear a lot insinuating? of people Are mushrooms not enough? saying about the 2.2 Well, story it's is like possible people really couldn't OP. afford to be picky back then. And so far, I'm actually enjoying Wuthering Waves Now, stories. even Like, Saurians have more really. options than that. Sustenance and strength. Such are the pillars of faith. So what do you think? A pretty enticing offer, wouldn't you agree? Once you become my subjects, all you have to do is build a civilization dedicated to the mushrooms. And then
Exactly. Nation of war who dance, who graffiti, and have eating festival. That's exactly what I have in my mind. What do you mean? I What have some happened doubts next? about this being a nation of war. Right. If the humans dedicated themselves in service to you, then shouldn't you have your own tribe at this point? Or even... But I've read a lot of woven I scrolls mean, if you take about a look the at heroes from Mavika's that kit, land, Mavika's and kit I've never come looks across anything nice, about some kind of mushroom but the savior. weapon she chose was like pike. She's like Archon of war. And what does she chose for her weapon? A bike. Okay. It's hard to digest, but it's okay. Look, design and otherwise, she would be fantastic if she was not Archon of this particular area. The bike thing is nice. That's something new. But as a Archon of war, being a Archon of Natlan, it definitely does not suit her playstyle. Or at least that's what I think. But everybody has their own opinion. There are a lot of people who like that thing. There are a lot of people who hate that thing. And I'm one of them. But I still enjoy her Of kit. course not. I was in a different nation at the time. I don't suppose you know their history, too. Yeah, and we didn't hear anything about I mean, a there should be mushroom a civilization. limit where you can justify a character by their kit. You know? I never said it was Sumeru. If you introduce I have Paimon no as a idea playable where that character, what would assumption you is coming expect from from. Paimon? To ride a bike? Ride a boat? No. You expect her to do something like look at her clothing and all that thing. She definitely looks like she has some connection with those 3 moons. You know about the 3 moons things? They just reveal in the trailer. She definitely has some sort of connection with that moon thing. So if I'm just giving an example. If in future Paimon becomes a playable character, we can expect some sort of a cryo-like abilities or maybe something like that, or a new element maybe, if Genshin thinks. If not, she's like going to be either hydro or cryo. But this is just an example. That's what I think. You definitely would not go out of your way and give Paimon some bicycle or bike or ship to fight off enemies if she becomes playable, right? That's how you create your character based on your lore. A trivial detail. You know what? You don't deserve to know what happened next. Abyss corroded strong bosses. Yeah, they could have done that. Scary NPCs affected by Abyss, but let's not keep mushrooms. Yeah. Yeah, if you want us to respect you, stop being so secretive. True. If we don't know how the story ends, it doesn't hold much weight now, does it? All right, fine. Same rules as before. If you want the truth, you'll have to use your wits to earn it. If you fail to prove your worth, good luck getting another detail out of me. He ran off. I personally think this quest should be like in Sumeru, because these mushroom things and all that eating thing. Oh. It's suitable if this was introduced in back in Sumeru. Or even if they just introduce this character as a Sumeruan character and not Latlan thing. He jumped down from here. It would be So better. it looks like we just need to... Is something wrong, Traveler? Off? How? That's how I feel too. Based on his personality, if he won't tell us how things turned out in the end, Yo, what's up? it must be because it's not something he can How you brag doing, about. Nixo?
Or a companion character that can do something like buffs and yes. Besides, how did he even get from Sumeru That to would work Natlan? too. Seems like he's avoiding that subject too. And through it all, he still hasn't given up on recruiting us. Even though he's in for a rude awakening. Don't get me wrong. This character is not bad. Her design is not bad. The skill set and all that thing looks funny. But her being in Natlan, that's a little bit strange for me. Yeah, he seemed pretty annoyed with our questions. Why not just kick us to the curb? You seem sleepy, man. Yes, I'm exactly sleepy right now. I don't know why, but maybe because of some medicine I just took. Alright, sounds like a plan. Let's go! From last week, I was not feeling well, so I had to hospitalize and I got some medicines. And those medicines are actually some sort of a thing that made me sleep. So maybe because of that, whoa! I thought I fallen in there and just died. Okay, this looks cool. Catch me if you can. If you can figure out which way to go, of course. Absolutely insufferable. Come on, let's find him. Okay, this looks fun. Leave this to me. I'll clear a path for you. Let's go. I think we can get these mushrooms to form a path. We just need to wait for the right timing. Get a load of this. Watch out, Marissa! Don't worry about me. I've got this. Okay, so all we need to do is just press the forward button and she will do her job all by herself. Okay. Time to go. And there we go. Lul. What is this? Let it give us a ride. Okay. All right, this should be good. Get ready and jump. Well, you said jump, but ये नहीं बताया कि jump कहाँ करना है. Backed into a corner, huh? We've got But you slap this नहीं time. किया please. चमाड़ दी भाई उसको खींच के. Well, that hurt, you know. You humans have such violent tendencies. The animation at the quest end is so cute. Yes. अरे तेरे भाग गया. Not again. Although I think I pulled something off of him. What is that? A ball of mist. Oh no, it's spreading. Ah, they're gonna eat us. Gonna eat us. Seriously? This makes no sense. Ungrateful humans. At this rate, I won't have any clones left. I mean, at the start of the quest, they are all about feeding humans and establishing some sort of connections after they eat mushrooms, and now they are scared they are gonna eat us. Okay, this makes no sense. The more my clones are consumed, the less power I have.
Oh, the situation grows dire. I started Wuwa too. Yeah, Wuwa feels very nice, especially in the uh, story department. The story is so cooked up right now. Really fantastic. Why must the humans eat so much? Even Aranara were unique. Yeah. Sorry. My power is all but spent, but it was still enough to control a single human at least. Now all of Sumero knows how scrumptious my mushrooms are. So if I want to grow, I must relocate. And if I want it to happen fast, I need suitable environmental conditions. You! Take me somewhere hot. The hotter the better. Yes, my lord. So this mushroom is from Sumeru. Another reason for Is this this the quest to place, be human? in Sumeru. Yes, this is a volcano in a land far to the west. The temperatures here get very high. It should be a most suitable location for your lordship to regain his strength. I shall now find a good place to plant you, my lord, so that your mycelial majesty may take root in this fertile land. Yes, proceed. Huh? Hurry. An earthquake? No, a volcanic eruption! So that's how it ended. No wonder he tried to hide it from us. It's pretty embarrassing. I thought he said people formed communities around this mushroom and used it as their main source of food. Yeah, but it looks like his following got too big and he couldn't keep up with the demand. Huh. Is somebody He calling? used the mushrooms as his main recruitment tactic. But then the situation got out of control. No, not right now. Which means the more mushrooms the humans ate, the less powerful he became, right? Wow. So his following didn't last long. Nope. Which explains why there aren't any records about some kind of mushroom civilization. In the end, he mind-controlled a human to bring him to Natlan and then got buried under a pile of The volcanic entire tribal rocks. thing is centered around this mushroom thing. Yeah. For who knows how long. When we were talking to him earlier, he seemed kind of, out of touch, you know? Okay. Well, he has been living under a rock, so that checks out. But clearing out this area for your orchard finally allowed him to start regaining his power. I got Encore, first 5 stars. Is she good? She's really fantastic. If you learn how to play properly, you're going to enjoy that Encore. She's really fantastic. She's actually high S tier if you know how to control her movements and attacks. She's really that good. Yeah, that sounds right. My parents always thought it was so Oh. weird that mushrooms kept popping up the- around the orchard no matter what we did. Now it Dar makes lam ye. sense. Wait, but if everything we saw is तुमचा आवाज true, भरपूर असतो कारण that मला. means this mushroom has mind control powers or something? That's a recipe for disaster. Hold on. Do you remember what he showed us? A group of humans worshipping Yeah, a have to giant practice mushroom. those It just doesn't make sense. dodge and They attacks. must have Yes, been dodge mind controlled. counters, parry. There are a lot of things in Wuthering waves. That's really fantastic thing. But when he started running out of power, he couldn't keep it up. I mean, there is some uniqueness in every single game, but it's up to us what we enjoy the That's why most. he doesn't seem to be able to control us I used to either. enjoy Genshin Impact story, and I was actually looking forward for this story to end. I want to know about what exactly happens when our main character finds her or his sibling, and what holds, what future do they hold? Do we also get some sort of new element or other thing about Abyss thing? That's what I'm curious about. Oh? Why? Because there are some characters who really does not belong to these 7 elements that this game has. Like Kirk, they are actually introducing her with cryovision, but I really does not like that because she has a lot of strength
She has some sort of abilities which can just shrink. You know that cutscene we had in Fontaine? She just shrunk all the gigantic whale into just nothing but just an orb. She opened a portal to the I don't know where. She can teleport anywhere. That simply looks like abyssal energy or something. That does not belong to any other elements that we have right now in the game. And her master is one of those 5 sinners who has abyssal power under their command. So if they are to introduce such characters, there has to be like in new elemental form, like abyssal or shadow type of thing, or maybe something like a new thing. Because technically, when our character, I mean, this main character came into this Genshin world, they had a lot of power and a different kind of power. But after fighting with that unknown god, they lost their power. That's the story. That was the starting story, right? So I want to see what exactly power they had before they came here, and how they got here, and what was they actually doing on other planets or things. That's what I'm curious about. And that's the only reason I'm sticking to this game right now. Nothing else. What if the new element comes? That would be actually a fantastic thing. I was actually expecting the new element to be introduced with Skirk's introduction, but yeah, that's... In the end, they just made her cryo element. So let's continue with this thing. All right. Let's Then just end let's this find thing this now. mushroom. Did she just died or something? No. I thought she died there. Oh, the environment changed again. Nothing to phase Paimon at this point. Let's keep looking. He can't hide forever. Seriously? Let's ride. Try it. I'm going in. Yeah, look at you, Foozle. Get to work. Eat Lolene. Eat Papa. Kapow! So you made it this far. Impressive. In that case... He hid himself in the statue. What should we do? Actually, that checks out. We're just gonna smash it, right? Cool. It's justice o'clock. What exactly are we trying to do here? So yeah, she has no resistance to interruption in this state. Okay. Let me guess, she will get her resistance to interruption at C1. We thought you were just While a doing mushroom the that happened to plunging thing. taste good. But now we know how dangerous you are, so we have to stop you. It would seem you're not completely devoid of intelligence.
fitting for my future subjects. Still, you're overlooking a very important detail. Did you think I was running away because I was scared? Well, this is a world of my creation. My will rules supreme. My schemes have been exposed. Why do I feel like No matter. he's going to My goal has already get been achieved. a butt slap soon? What? Although I prefer to call myself the Sage Lord of Fungi, in the human tongue, I am known by another name. You now behold the god Bifrons, the sole protagonist in this endless carnage! Indeed, foolish, shallow, and ungrateful humans! Have you forgotten your savior during this time of war? I am the god who's protecting Hello, welcome to a live stream. The during this Archon न्यू war. मैप बहुत मस्त है 5.5 का स्कीटर मजा आया यार 30 पूल्स में एक्सप्लोर 30 बस 30 पूल्स मिले एक्सप्लोरेशन में आई थॉट ज़्यादा मिले रहेंगे वही ना 30 पूल में क्या ही नाइस भाई 30 पूल में घंटा कुछ नहीं होता कम से कम 60-70 पूल तो देने चाहिए तो उन्होंने satiate your hunger, no means with which to counter the hordes of monsters, and the gods loom overhead, नया पैच है capable भाई of reducing you to ashes with a simple snap of their fingers. Just one word, I mean, and you could have had एक my कैरेक्टर protection. बैनर के लिए But 60-70 now, पुल that opportunity काफी is है lost मतलब forever, काफी नहीं and है you लेकिन only फिर have भी your own उतना stupidity तो and एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं arrogance to ना blame. एक फेज के लिए एक पूरे बैनर नहीं ना फेज 1 फेज 2 का नहीं काउंट करना एक सिंगल फेज का काउंट करना No matter. My plan, what you ताकि एक saw when you 50-50 का cut the सेंस तो बना रहे mushrooms was not mist, but हाँ गारंटीड नहीं है लेकिन एटलीस्ट spores set to 50-50 तो बनी sprout रहे into green mushrooms very soon. And that's where their true power lies. Because Hey, given a bit of hey, time hello, to Neo ID. grow, What's up, buddy? green mushrooms will multiply exponentially. You see, अभी इसको considering my current भरो level of power, बहुत I बकबक कर had रहा no है way to create large number of clones. And you delivered one to me on a silver platter. That was my plan all along. इतना वोवा भी नहीं देता भाई वोवा तो भाई आराम से दे देता मैं भी फार्म किया ना मेरे पास ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर हैं वोवा पे पड़े हुए हैं फ्री टू प्ले बस 2 ही कैरेक्टर मिसिंग है 2 कैरेक्टर छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर पड़े हैं मेरे पे और उनके वेपन्स भी तो मैं एक्चुअली वोवा में रिचार्ज भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये है पता नहीं वो क्यों ब्लॉक करता है मेरे पेमेंट्स तो मैं वोवा में ये कर ही नहीं पा रहा हूँ कुछ बाय नहीं कर पा रहा हूँ वेपन्स भी है भाई वेपन्स तो गारंटीड है वैसे भी वहाँ पर ओ क्या सॉलिड वेपन स्टार्ट्स है भाई उनका मजा आ रहा है Then I shall reclaim my dignity and status as a god, achieve victory in the Archon War, and take revenge on Sumeru. सही का नहीं लक का पार्ट है वो Genshin is not that soft. क्या बात कर रहे हो भाई? You have no concept of time, do you? Newsflash: the Archon War is old news, buddy. Nonsense. चलो अभी भरते हैं इसको अबे कितनी बातचीत करोगे यार भरो इस मशरूम को All I hear in this land is war this and war that. If you fear the Archon तो भाई लैंड इज वॉर ऑफ द नेशन ऑफ वॉर है तो उसमें तो वॉर ही सुनाई देगा ना तुझे गजब मशरूम है भाई ये बताओ भाई इसको अभी इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है I guess I've heard about that once or twice, but मशरूम आर्कॉन वही ना भाई ये बढ़िया बोला भाई आर्कॉन ऑफ मशरूम using lies and trickery to befuddle me. You know, my original plan was to imprison you here until the end of time. But now, I have a better idea. बेटा पिचकेगा Once तो nothing is left of this land but an endless field of mushrooms, I'll set you free. You get the honor of witnessing that despair in person. Now, I
was going to offer you a उसका glimmer चेहरा of देखो, hope by allowing you लिटरली to pledge yourselves to me एक्सप्रेशन and देखो take on the एमसी के, burden of managing घंटा my फर्क ना पड़ा, वो बोला तेरे एक बार बक But बक हो जाते फिर तेरे the को भरता deal हूँ। is off. इसका चेहरा देखो, मतलब लिटरली वो भी पक चुकी है इस मशरूम की बक बक सुन के। What did you say? The traveler explained everything. The only reason I could hear you is because I've eaten so many mushrooms over the years. Yeah, and Paimon ate a whole bunch during the competition. Paimon's small, so it didn't take as many mushrooms. अच्छा, for her to be रही बात effective. इसकी, तो वुथरिंग वेव्स में एक छोटा सा डिफरेंस है कि 80 कैरेक्टर की है वहाँ पे पीटी, टोटल 90 नहीं है, उसमें थोड़ा सा रिलीव है। अगर और उसके कंपेयर करें तो थोड़े कम एस्ट्राइड जरूर मिलता है, लेकिन एटलीस्ट हर पैच में इतने तो मिलते हैं कि तुम एक कैरेक्टर पुल करो, भले ही वो 50-50 लूज हो विन हो। मैं वो एक्सपेक्ट कर रहा था बाकी गाचा के। इवन रिजर्व 1999 अगर तुम खेलो तो उसमें भी ऐसा ही है सीन, वो काफ़ी बढ़िया गाचा गेम है। अगर तुम्हें वो स्टोरी और ये सब पसंद आए ना, तो एक रिवर्स 1999 करके एक गेम है, बहुत सारी मज़ा आ गया मुझे वो भी गाचा में खेल के। और अभी एक और आ रहा है आर्कनाइट एनफील्ड डेड, उसमें बेस बिल्डिंग वगैरह टाइप का है कुछ सीन, तो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। आर्कनाइट एनफील्ड डेड बहुत सॉलिड लगा मुझे। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले दैट थिंग, बहुत प्यारा लगा मुझे You said your आर्कनाइट। mushrooms need time to grow. आर्कनाइट का एक्चुअली मेरा ये पहला गेम होगा जो मैं ट्राई करूंगा एनफील्ड डेड, बट जब वो आएगा मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उसे। But keeping a few humans right where I want them is थोड़ा a सा मुझे small task. कॉम्प्लिकेटेड लगा वो Unless you बेस think you can बिल्डिंग take थिंग। on a creature as I mean, vicious and powerful as the jade plume terra shroom. अगर तुम लोगों ने ओपन काइंड ऑफ यस, अगर तुम लोगों ने आर्कनाइट एनफील्ड डेड का ये देखा होगा गेम प्ले, वो जो बेस बिल्डिंग वगैरह जो है वो थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा, लेकिन वो एक काइंड ऑफ फन थिंग है, मज़ा आ रहा था मुझे उसमें। पार्ट्स कलेक्ट करके वो सब बनवाना, इन सब स्ट्रक्चर वगैरह ये सब थोड़ा अलग लगा मुझे, तो उसमें भी मज़ा आया। और आगे तो भाई ऐसे बहुत सारे गेम्स आने वाले जो ट्राई करना है मुझे, स्पेशली वो फ्लाइंग माउंट वगैरह जो था ना, तो 12 उसका पता नहीं है, लेकिन वो आया तो डेफिनेटली ट्राई करूँगा। उसमें लाइक तीनों गेम्स के फीचर काइंड ऑफ ऐड है, लाइक फ्लाइंग है उसमें, माउंट्स पे बैठ के तुम पूरा ये एक्सप्लोर कर सकते हो सारे रीजन्स। उसमें काइंड ऑफ वथिंग भी है कि डॉज पैरी डॉज काउंटर वगैरह भी है उसमें। कौन से वो पोकेमॉन वाला गेम कौन सा था जिसमें तुम्हें वो पोकेमॉन कलेक्ट करके उनसे तुम काम करवाते हो, उसका भी थोड़ा सा एलिमेंट उसमें गेम में डलवाया हुआ उन्होंने। वो लॉन्च कब हो रहा है ये पता नहीं मुझे, होगा तो ट्राई करने में मज़ा आएगा डेफिनेटली। नए नए गेम्स ट्राई करने में तो मज़ा आता है जब तक उसका एक्चुअल पता नहीं चलता कि वो है कैसे। पाल वर्ल्ड एग्जैक्टली, पीसी गेम, हाँ पीसी भी आने वाला है, पीसी और मोबाइल दोनों पे आएगा बेसिकली। क्या नाम था उसका, लेट मी सी। If he was telling the truth, we need to get back to the tribe as soon as possible. उसका नाम है You must be bluffing. A few measly humans couldn't possibly be that powerful. And what's this about a war against the abyss? 26 के आसपास ना। Paimon's not gonna waste one more word on this guy. Let's go. कहाँ गया, मैंने कहीं तो देखा था उसका। प्रोजेक्ट कुछ तो भी था नाम, और एक दो नाम थे उसके, एक प्रोजेक्ट मुगन वगैरह ऐसा था शायद, पता नहीं। What should we do? अनंता, वही वो आई थिंक प्रोजेक्ट मुगन ही है ना जो अनंता में रीनेम हुआ। हाँ वही अनंता, वो भी एक सॉलिड गेम मुझे लगा। आई मीन ट्राई करने को क्या जा रहा है भाई, क्या पता अच्छा गेम मिले कुछ फ्यूचर में। प्रोजेक्ट मुगन पहले नाम था, अभी अनंता, वही एग्जैक्टली, वो भी एक ट्राई करना मुझे। और एक और था भाई जो फ्लाइंग माउंट वाला मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो था ए से कुछ नाम था उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी वो।
अरे एमसी की आवाज कहाँ है? मेन कैरेक्टर की आवाज तो निकलवाओ। सब लोग बात कर रहे हैं, मेन कैरेक्टर का सिर्फ नीचे सबटाइटल चालू बिना आवाज के। ये गलत है भाई। हेलो दीपक, व्हाट्स अप? हाउ आर यू डूइंग बड़ी? More, please. आजूर प्रोमो लिया, अब नाम याद आया मुझे। आई थिंक मैं उसका प्रोनाउंसिएशन कहीं गलत तो नहीं कर रहा, मुझे पता नहीं, तुम लोग ही देख लेना। गेम प्ले गूगल कर लेना तुम लोग। आजूर प्रोमो लिया करके है, उसमें सारे गाचा गेम्स के एलिमेंट्स है। उसका वॉइस एक्टर मना कर दिया, क्यों? कितने टाइम से खेल रहे हो? देखो गेम्स तो मैं काफी टाइम से खेल रहा हूँ, लाइक पर्टिकुलरली अगर सिर्फ गेमिंग का बोलो तो मैं 15-18 साल से गेम खेल रहा हूँ। We took care of all the green mushrooms. Now, बहुत टाइम हो care गया to tell मुझे me गेम what खेलने। happened earlier? रही बात गाचा गेम्स की, तो गेंशिन इम्पैक्ट चालू करके मुझे लाइक 1-1.5 साल हो गए। बड़ा Planted a god in Varessa's orchard and ये वॉइस एक्टर she's का been जगह ले रहा eating है। it अरे ever वो since. बहुत एमएफ है, माइंड फक है, पता है। Not every god that's still around is 1.5 साल super बोला तो सही strong, मैं। but this one reached a दीपक whole ब्रो new 1.5 साल हो गया level. गेंशिन इम्पैक्ट खेल के, मतलब चालू करके। Also, didn't he have his facts बाय द all वे ये wrong? दूसरा आईडी है, He kept going on प्राइमरी आईडी about तो some सारा kind क्लियर of करके रखा है। Archon War. Ah, well, Natlan was never part of the Archon War, so it rarely comes up around these parts. It makes sense that you don't know much about it, Varessa. और इसमें भी क्या है, मतलब कंप्लीट ही है Are ऑलमोस्ट। you serious? Of course. The infighting between the dragons pretty much took over everything. So, there was no room for the gods to मैं join बात in. कर रहा था अज़ुरे प्रोमो लिया गेम, वो एक बार देख लेना, उसमें मुझे वो काफी सॉलिड लगा गेम। उसमें फ्लाइंग माउंट्स है, लिटरली फ्लाई करते हुए पूरे एरिया कवर कर सकते हो। तुम्हें किस मतलब गेटेड नहीं है उसमें कुछ, मतलब दिख तो नहीं रहा फिलहाल तो। उसमें कॉम्बैट सिस्टम इसके जैसा है, वुदरिंग वेव्स जैसा है, तो ये दूसरा हो गया। पाल वर्ल्ड जैसे तुम पोकेमॉन पकड़ के उनको यूज़ उसको उनसे काम करवा सकते हो, ये तीसरा गेम का एलिमेंट उन्होंने उठाया है। और ऐसे काफ़ी गेम्स जिसके एलिमेंट्स उन्होंने उठाया उसमें मुझे दिखे, मतलब वहाँ पर एक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा वो गेम। जब भी लॉन्च होगा 25-26 में, आई थिंक 26 के आसपास लॉन्च होगा, 2026 की बात कर रहा हूँ, 26 तारीख में। तो जब भी वो लॉन्च होगा वो एक मुझे डेफिनेटली ट्राई करना है। बहुत सॉलिड लगा मुझे, आइडिया यूनिक लगा। ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक इंट्रोड्यूस करोगे भाई। कैरेक्टर रिव्यू कर दोगे क्या? डालो अपना यूआईडी डालो, मैं करवाता हूँ आगे। इनका खोल लेने दो मेरे को। लाओ दियो तुम्हारा यूआईडी। न्यूलेट महू का डूबीलेट 41,000 HP, नॉट बैड, बढ़िया है, सॉलिड है। बर्स्ट लेवल 8 कर लो, स्किल बर्स्ट है ना, लेवल 8, लेवल 7, लेवल 8 तो करके रखो, उसको बेनिफिट उतना मिलता ही रहेगा ना, मतलब थोड़ा डैमेज भी इम्प्रूवमेंट ही है। 35.7 पे 241, नॉट बैड, बढ़िया। 627 अटैक परसेंट, ये चेंज कर, अगर तुम्हें इम्प्रूव करना है ये पीस तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि 2 डेड स्टार्ट है। अटैक कुछ मतलब लिटरली कुछ हेल्प नहीं करता नेवेलेट को। इसमें तुम देखो कि इसमें तुम HP परसेंट मिले और एनर्जी रिचार्ज साथ में मिला तो बढ़िया है, क्योंकि ये लिटरली तुम्हारे 2 स्टार्ट पे टिका हुआ है फ्लावर, है ना। तो इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी रूम है इस फ्लावर पे। यही तुम इसके यही सब स्टार्ट मिला है, और साथ में कुछ HP परसेंट और एनर्जी रिचार्ज या फिर कुछ मिलता
तो डिसेंट था। 3 डेड स्टैट मतलब आई मीन 1 डेड स्टैट भी चल जाता है, लेकिन ये 2 है, मतलब लाइक 50% पे है तुम्हारा पोटेंशियल। 7 पे 13 एनर्जी रिचार्ज इधर भर के मिला है, ये ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। मतलब एनर्जी रिचार्ज एक्चुअली नीड नहीं है नहीं, क्योंकि तुम प्रोटोटाइप एम्बर भी यूज़ कर रहे हो, बट फिर भी ये भी चेंज हो सकता है अगर तुम फार्म करो तो। अकाउंट रिव्यू यस हो सकता है अगर तुम चाहो तो। अपना यूआईडी ड्रॉप करो, हो जाएगा। ये तो डेफिनेटली चेंज होगा, और इसमें तो बहुत सारे डिफेंस पर रोल गए हैं। और दूसरा एक और डेड स्टैट है अटैक, फ्लैट अटैक, है ना, तो ये चेंज हो सकता है। सबस्टैट अच्छे हैं तुम्हारे, आई मीन क्रिट रेट क्रिट डैमेज पे रोल तो डिसेंट गया है, बस जो बाकी 2 स्टफ स्टैट है ना उसमें मार खा रहा है। लाइक क्रिट डैमेज पे इसमें देखो, इसमें क्रिट रेट कम मिला है, HP % में ज़्यादा रोल मिला, ये चल जाएगा अभी इससे ना, ये सर्कुलर तुम्हारा चल जाएगा, सिर्फ 1 डेढ़ स्टैट है। बाकी देखो कंपटीशन तो कुछ है नहीं, तो तुम आज फार्म करो, 2 महीने बाद फार्म करो, 2 साल बाद फार्म करो। तुम्हें तुम्हारा कैरेक्टर एकदम परफेक्ट कंडीशन में चाहिए, तो उसके लिए परफेक्ट स्टैट फार्म करो, है ना। तुम किल में है वही अर्लिकीनो, ओके होल्ड ऑन, तुमने क्या बोला था? मवुई का भी बोली थी ना तुमने, लेट्स सी। ओके टाइडल शैडो 37.7 पे 201, नॉट बैड। अटैक बहुत कम है, डोंट टेल मी तुम अरे यार तुम एलिमेंटल मास्टरी, और देखो जब तुम एलिमेंटल मास्टरी यहाँ पे ये जाओगे ना, क्या सैंड्स, तो तुम्हें एक्चुअली नुकसान है, क्योंकि तुम्हारा अटैक देखो कितना मार खा रहा है, और तुम ऑलरेडी 4 स्टार वेपन यूज़ कर रहे हो, है ना। तो ट्राई करो कि यहाँ पे तुम अटैक % ही यूज़ करो, एंड उस पर तुम ये जो सबस्टैट है वहाँ पे तुम एलिमेंटल मास्टरी के सबस्टैट देखो, लाइक क्रिट रेट क्रिट डैमेज एलिमेंटल मास्टरी अटैक %, ऐसे सबस्टैट वाले तुम देखोगे ना तो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, और ये जो एलिमेंटल मास्टरी है वो कवर अप हो जाएगा वहाँ से। क्योंकि अगर तुम एलिमेंटल मास्टरी सैंड्स के साथ पायरो डैमेज बोनस गॉबलेट यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारा अटैक देखो कितना हिट हो रहा है। तो ये तुम चेंज कर सकते हो। और बाय द वे स्किल मैक्स आउट कर लेना, काफ़ी हेल्प हो रही है, क्योंकि मल्टीप्लायर्स बहुत ज़्यादा है स्किल का। लाइक शांगलिंग के जो बर्स्ट का 3rd पार्ट होता है ना, उसके मल्टीप्लायर इसके स्किल मैक्स आउट में मिल रहा है, बताओ। तो आई वुड रियली रिकमेंड दैट इसके तुम स्किल भी मैक्स आउट कर लो, और ये डेफिनेटली अटैक स्टैट्स यूज़ कर रहा है। यहाँ पर स्टैट्स पे तुम्हें बस यही फोकस करना है, क्रिटेड क्रिट डैमेज एलिमेंटल मास्टरी फ्लैट अटैक या फिर अटैक %, डिपेंडिंग इन कौन सा है। अगर तुम्हारा लाइक यहाँ पे अटैक % है तो यहाँ पे फ्लैट अटैक देखोगे तुम, है ना। तो इस टाइप के तुम्हें ढूंढना है, मतलब फार्म करना है बेसिकली। आर्लेकिनो वाइट त्रिशूल, भाई कितना एम चाहिए? 150 से 200 एम मोर देन इनफ है। मिनिमम 150, उसके ऊपर जितना भी मतलब मिल रहा है वो बोनस ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अंधाधुन ये एलिमेंटल मास्टरी के लिए ही जाओ। मिनिमम 150 काफ़ी है, मोर देन इनफ है। 150 के 200 के आसपास रखो बस। डोंट गो आउट ऑफ योर वे एंड पुट लाइक डू दैट मिस्टेक के एलिमेंटल मास्टरी का सैंड भी डाल दिया और साथ में पायरो डैमेज बोनस गॉबलेट भी डाल दिया। उससे हाँ तुम्हें एलिमेंटल मास्टरी तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हारा अटैक % बहुत ठीक होगा। जैसे अभी यहाँ पे देखियो 1400 अटैक, ये वाइट टैसल ना पिछवाड़े में घोप देगी तुम्हारे, इतना कम फ्लैट अटैक। हमें ये अटैक कोई बात नहीं करता, मेरा तो काम यही है कि हेल्प करना, है ना। नॉलेज शेयर करेंगे तो सबको बेटर फायदा मिलेगा ना। मैं यहाँ पे नफे रख के क्या करूँगा? अभी 1400 अटैक लेके कौन सा ये हेलीचल का घर तोड़ने जा रहे हो भाई तुम, हरली चीनों लेके हैं? क्या है ये? एलिमेंटल मास्टरी तो ठीक है, क्रिट रेट बहुत ही कम है ब्रदर। इतने क्रिट रेट में क्या करोगे तुम? मक्खी ना मरेगी इसमें तो, मक्खी पे भी क्रिट ना मार पाओगे तुम, बता रहा हूँ मैं भाई। मैं 94% क्रिट रेट पे क्रिट रेट मिस कर रहा हूँ।
और तुम 48% पे हो। सोचो, कम से कम 70 से 75 के आसपास क्रिट रेट रखो। बर्स्ट ये लेवल 8 कर लेना अपना बर्स्ट मिनिमम, उसके ऊपर तुम्हें करवाने तो करो, एटलीस्ट लेवल 8 कर लो। एनर्जी रिचार्ज क्यों दिया है इसे? ये चेंज करो ना। एनर्जी रिचार्ज बिल्कुल नहीं चाहिए इसको। सैंड्स अटैक % सैंड्स चाहिए, पायरो डैमेज गॉबलेट चाहिए। और ये क्या गॉबलेट है? चेंज करो भाई। ट्रोल वगैरह ये क्या है भाई? हेलो, HP % सर्कुलेट, आर यू किडिंग मी? ये क्या है? ये ट्रोलिंग के मूड में लाए हो क्या तुम? ये क्या है? कुछ फायदा ही नहीं है इसका। ये चेंज करो इसको। क्रिट डैमेज यहाँ पे डालो, क्रिट डैमेज, और साथ में इस पर क्रिट रेट वाले रोल देखो। क्रिट डैमेज क्रिट रेट ऐसे जाना चाहिए रोल्स, है ना। क्रिट डैमेज मेन सर्कुलेट देखो, उस पर क्रिट रेट वाला देखो। साथ में अटैक % एलिमेंटल मास्टरी, बाकी के जो मिले वो मिले। गॉबलेट में देखना, पायरो डैमेज गॉबलेट मिलना चाहिए तुम्हें, उस पर अटैक %, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एलिमेंटल मास्टरी, ऐसे 4 सब स्टार्ट होना चाहिए। अटैक % सैंड्स पे फ्लैट अटैक, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एलिमेंटल मास्टरी। फ्लावर पे अटैक % क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एलिमेंटल मास्टरी। आई मीन प्लम पे फ्लावर पे क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, अटैक % एलिमेंटल मास्टरी। ये एग्जैक्ट पीस ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये पीस परफेक्ट है तुम्हारा, इसके जैसा कॉम्बिनेशन रखो। और ये क्या है? ये HP % एनर्जी रिचार्ज। मैं बता रहा हूँ, वाइट टैसल ही लेगी और सीधा पिछवाड़े में डालेगी तुम्हारे पचक से, फिर भागते फिरोगे सारी इधर दुनिया में। वो सैंडल अलग से उतार के फेंक के मारेगी तुम्हें। जूते जो पहन के रखे ना ये अर्ली की इन्होंने, पता नहीं कौन से जूते पहन के रखे, वो हील्स वाले, फेंक के मारेगी तुम्हें। पाप कर रहे हो तुम उस पर, बता रहा हूँ मैं। पापी इंसान। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? मूवी का तुम्हारी देखनी है, अब तुम्हारी मूवी का देखता है। ये तो भाई पापी इंसान निकला 100, बड़ा पापी इंसान है। टाइडल शैडो, ओके 40 219, ओके नाइस, वेरी नाइस। एक डेड साइड ये चल जाएगा, वेरी नाइस। क्रिटिकल डैमेज, अटैक %, वेरी गुड। ये मस्त बढ़िया पीस है, डिसेंट पीस। अटैक %, पायरो डैमेज गोल्डेड, परफेक्ट। आई मीन एक डेड साइड चल जाएगा। 4 बेसिकली फार्म कर ही सकते हो तुम। मतलब क्या है, कोई कंपटीशन वगैरह वाला तो है गेम है नहीं कि कोई भाई ये करना, ये आज की आज में मुझे 4 सबस्टैट परफेक्ट चाहिए ना। आराम से फार्म करो, लेकिन एम रखो कि 4 सबस्टैट तुम्हें चाहिए ही चाहिए परफेक्ट, तब जाके तुम 3 के साथ सेटिस्फाई हो सकते हो। उसके नीचे मत देखो, क्योंकि तुम एम रखो कि भाई मुझे सिर्फ क्रिट डैमेज मिल जाए, साथ में 2 सबस्टैट फालतू मिले तो भी चल जाएगा। तो फिर तुम लोग क्या है, मतलब सोचो कि भाई कि मिल तो गया है तो क्यों फालतू में और फार्म करो। क्या पता तुम उसके बाद 1 महीने बाद या फिर तुम्हें उसके बाद प्रॉपर 4 सबस्टैट वाला मिल जाए, एकदम बढ़िया GG पीस, है ना। तो फार्म करना रुकना मत, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट के लिए रूम रखो और इम्प्रूव करते रहो कैरेक्टर, क्योंकि उसी में तो मजा है यार। नहीं तो हम गेम क्यों खेल रहे हैं? कैरेक्टर इंप्रूव करने के लिए तो ओवरऑल तुम कैरेक्टर पुल कर रहे हो ना। लेवल 1 कैरेक्टर तो थोड़ी ना खेलेंगे हम। लेवल 90 इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि उसके स्टैट्स इंप्रूव करें। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो भले 1 साल बाद कैरेक्टर इंप्रूव करना ही तो मेन टारगेट है हमारा। ये डेफिनेटली चेंज हो सकता है ना। आई मीन रोल्स बढ़िया है, बट क्रिट रेट पे और जोर दे सकते हो तुम तो, और ज़्यादा क्रिट रेट। क्योंकि क्या है, मुझे थोड़ा सा डर लगा रहता है, क्योंकि माविका का मेन सोर्स ऑफ डैमेज है उसका बर्स्ट। अगर तुम 80% क्रिट रेट पे वो अगर मिस कर देते हो तो तुम भारी नुकसान हो सकता है तुम्हें। भाई मैं 94% पे मिस कर रहा हूँ, तो इमेजिन करो 80% पे मिस करना कितना तुम्हें फील होगा। तो ट्राई करो कि क्रिट रेट पे यहाँ पे थोड़े ऐसे रूल्स जाए तुम्हारे, तो अच्छा रहेगा। आई मीन इम्प्रूवमेंट के लिए तो कर ही सकते हैं। EM चला जाएगा, उसकी टेंशन मत लो तुम, EM मिल जाएगा तुम्हें। अभी देखो तुम जैसे जैसे फार्म करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें पीसेस, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, तुम्हें पीसेस वही देखने हैं, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, अटैक %, एलिमेंटल मास्टरी। आज नहीं तो कल तुम्हें डेफिनेटली पीस मिल ही जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि तुम्हें
पूरे गेंशिन इम्पैक्ट के टाइम पे कभी पीस मिलेगा ही नहीं, कभी ना कभी तुम्हें मिल ही जाएगा वो पीस। तो अपना फार्म हमेशा कंटिन्यू चालू रखियो, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा तुम्हें। और जब भी मिल जाएगा ना उसको मस्त से एकदम ऐसे जी करके पीस बना लेना, है ना, एकदम सॉलिड पीस। ईएम का कोई टेंशन नहीं है। तुम देखो, दो ऑप्शन है, एक तो या तुम अपने आर्टिफैक्ट्स पे एलिमेंटल मास्टरी ढूंढो, दूसरा ऑप्शन है तुम ऐसा कोई कैरेक्टर या फिर ऐसा कोई आर्टिफैक्ट सेट यूज करो जो एक्सटर्नली तुम्हारे पूरे टीम को या फिर एक्टिव कैरेक्टर को एलिमेंटल मास्टरी प्रोवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंटल मास्टरी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम किसी एक कैरेक्टर को, तुम्हारी टीम में से एक ऐसे कैरेक्टर को इंस्ट्रक्टर सेट प्रोवाइड कर सकते हो, और जब वो इंस्ट्रक्टर सेट वाला कैरेक्टर किसी एलिमेंट से रिएक्ट करेगा तब वो तुम्हारी पूरी की पूरी टीम को 120 एलिमेंटल मास्टरी देगा। तो अगर तुम्हारे पास लाइक 0 एलिमेंटल मास्टरी हुआ तब भी तुम्हें उस आर्टिफैक्ट सेट की वजह से, जो तुम्हारे किसी एक कैरेक्टर के पास रहेगा, सपोर्ट कैरेक्टर के पास, उसकी वजह से तुम्हारी पूरी टीम को 120 एलिमेंटल मास्टरी मिलेगा पूरे 8 सेकेंड्स के लिए, 8 से 10 सेकेंड्स के लिए, है ना। तो वो भी एक अच्छा चेंज है। या फिर तुम यूज़ कर सकते हो कैरेक्टर्स लाइक, कहाँ गया, इन गेम ही बता देता हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए। समथिंग लाइक दिस। अबे इसको तो हटा। I guess it's actually ये हटे तो मैं तुम्हें बताऊँ उसका एक और एग्जांपल। all right. विदाउट इम्यून 52 235 है मावी का। मैं बता रहा हूँ तुम्हें अभी कैसे सॉर्ट करना है वो। Maybe this sounds. रुको, इसको स्किप करने दो मुझे ताकि मैं तुम्हें सही से बता पाऊँ। Why is that? I never thought, but it's like if I start to doubt myself in the future. भाई ये डायलॉग स्किप का बटन क्यों नहीं ऐड करते हैं? Should we go check it? Oh, right. And it's not a quick. Good idea. हटाओ इसको। हाँ, फाइनली मैं तुम्हें अब बता पाऊंगा। देखो, तुम कोई ऐसा कैरेक्टर यूज कर सकते हो जो तुम्हारे पास शायद C6 पड़ा हो, और जो तुम अभी इस कैरेक्टर पे देखो, डियोना 6 पे क्या करती है, पूरे के पूरे 200 एलिमेंटल मास्टरी पूरे टीम को प्रोवाइड करेगी, है ना। जो भी 50% से ऊपर HP होगी, जब भी तुम्हारे कैरेक्टर्स की HP 50% से ऊपर होगी तो वो सीधा का सीधा 200 एलिमेंटल मास्टरी यहाँ से प्रोवाइड कर देगी। तो ये हो गया एक्सटर्नल सोर्स। दूसरा एक और सोर्स है समथिंग लाइक ये है सुक्रोस। तो सुक्रोस क्या करती है कि जब वो उसकी स्किल या फिर बर्स्ट से कुछ मतलब एनिमीज को हिट करती है तो उसके टोटल एलिमेंटल मास्टरी का 20% टीम को देती है। तो मान के चलो तुमने एलिमेंटल मास्टरी एनर्जी रिचार्ज पे सुक्रोस बिल्ड की है अराउंड 1000 एलिमेंटल मास्टरी, है ना, जो कि पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। कम मान के चलो 800 करिए तुमने, ठीक है, 1000 भी मत करो, 800 करिए, तो 800 के 20% तुम्हारी पूरी टीम को मिल जाए, है ना। तो ऐसे कैरेक्टर हो गए वो तुम्हारी टीम को हेल्प करेंगे। या फिर सीधी सी बात बताऊं तो जैसे कि मैंने आर्टिफैक्ट्स बताया था, वो आर्टिफैक्ट कहाँ गया, एक मिनट। तो आर्टिफैक्ट जो मुझे तुम्हें बताना है वो ये यहाँ पे, डोंट टेल मी बेटी छो, कहाँ गया, इंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूँ, हाँ वही इंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो, बहुत सॉलिड है आर्टिफैक्ट, इजीली यूज कर सकते हो उसको। मेरी मवई का 830 गेम आती है, नॉट बैड। तुम्हारे पास वेपन उसका सिग्नेचर वेपन नहीं है, और जो मैंने तुम्हारे स्टैट्स देखे उस पर भी तुम अगर 850 ऑलमोस्ट 900 के अगर मार रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है ना, कम नहीं है वो डैमेज, तुम ऑलमोस्ट मिलियन हिट करने वाले हो। थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो जाए ना तो तुम 1 मिलियन आराम से कर दोगे डेफिनेटली। क्रिटिकल डैमेज पे फोकस रखो, है ना, अटैक परसेंट पे फोकस रखो। ये तीन सब स्टैट तो तुम्हें देखने ही देखना है, क्रिटिकल डैमेज, अटैक परसेंट या फिर फ्लैट अटैक। इससे क्या होगा, तुम्हारा अटैक बूस्ट होता रहेगा, है ना। और अटैक बूस्टर तुम्हारे पास ये है ही बेनेट को इंस्ट्रक्टर की जगह पे
इस सेट पे यूज करो। कौन सा? यार मैं नाम भूल गया उसका, कहाँ गया वो? नोबलेस पे यूज करो ताकि वो 20% अटैक बोनस दे, है ना। सुक्रोस वगैरह यूज कर सकते हो तुम अगर इंस्ट्रक्टर वगैरह करवाना हो तो इंस्ट्रक्टर पे यूज कर लो सुक्रोस को, ताकि वो मतलब एलिमेंटल मास्टरी 20% उसके रिएक्ट करेगी तो उस पर भी दे, प्लस इंस्ट्रक्टर से 120 एक्स्ट्रा दे। और साथ ही साथ में बोनस ये होगा अगर तुम सुक्रोस को यूज़ करोगे तो कि दो ऑप्शन रहेंगे, या तो तुम उसको इंस्ट्रक्टर दो या तो फिर इंस्ट्रक्टर के बजाय उसको वीवी पे पूरा यूज कर लो। तो वीवी पे क्या रहेगा, तुम उसको लाइक फुल एलिमेंटल मास्टरी और एनर्जी रिचार्ज पे जाओगे तो तुम्हें 150 के आसपास तो दे ही देगी वो एलिमेंटल मास्टरी, है ना। प्लस वो वीवी से तुम्हारा रेस्ट रेट भी कर देगी। कहाँ गया वीवी? वीवी हेलो, 40% है ना आई थिंक रेस्ट रेट, ये रहा। हाँ 40% रेस्ट रेट भी कर देगी, वो एक और बोनस मिल जाएगा तुम्हें। तुम ऐसा ना थोड़ा सा मिन मैक्सिंग करके देखो, थोड़े से चेंजेस ला के देखो अपनी टीम में, डेफिनेटली तुम आराम से मिलियन पार आराम से हो जाओगे, नो डाउट। मावी का काजो हसुक्रो सिटलाली बेनेट, वही काजुआ की जगह मैं बोलूंगा सुक्रोज यूज कर लो अगर तुम्हें एलिमेंटल मास्टरी की नीड्स फुलफिल करनी है तो, है ना। काजुओं को क्योंकि ना खुद का बहुत रिक्वायरमेंट होता है, काजुओं को खुद को एलिमेंटल मास्टरी और एनर्जी रिचार्ज दोनों बैलेंस करना पड़ता है, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर उसको तुम 40% डैमेज बोनस वगैरह देना चाहते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम क्या बोल रहा हूँ, हाँ 40% डैमेज बोनस के लिए तुम्हें चाहिए 1000 एलिमेंटल मास्टरी, और हर रोटेशन में बर्स्ट होने के लिए तुम्हें चाहिए बहुत सारा, आई मीन 180 प्लस एनर्जी रिचार्ज प्लस ही है वो, और ये काजुआ की रिक्वायरमेंट है, तो वो थोड़ा सा हार्ड जाएगा, बट सुक्रोज डेफिनेटली हेल्प करेगी। टीम बनाओ अपनी, मावी का, सुक्रोज, सिटलाली, बेनेट, बहुत सॉलिड टीम बनेगी तुम्हारी। थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है ये रिचार्ज करने में, तुम्हारा बर्स्ट, आई मीन फाइटिंग स्पिरिट गेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ठीक है उतना चलता है। फ्यूचर में शिलोनेन पुल करोगे तो वो और भी तुम्हें अच्छा रिजल्ट देगी, नो डाउट बहुत प्यारा रिजल्ट देगी वहाँ पे। हेलो ब्रो, हेलो व्हाट्सअप, हाउ यू डूइंग ब्रदर? 2 फेज में शिलोनेन वेंटी राइट, हाँ वही फेज 2 में शिलोनेन और वेंटी आ रहा है। कौन याद कर रहा है? कैथरीन से क्यों मिल रहा है? 70 प्लस पुल किया इयान सन के लिए, बट उसकी जगह वरेसा मिल गई। अरे रे हिचकी आ रही है मुझे। Word from the speaker's chamber was that an Amurta scholar happened to be conducting Hello. research in the area. ब्लूमफायर ट्रायल में सेकंड चैलेंज के रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या बात कर रहे हो? रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर पा रहे हो? ये मैंने पहली बार सुना, शायद कुछ बग या फिर ग्लिच हुआ होगा, फिर मैंने अभी तक एक्चुअली ट्राई नहीं किया है वो इवेंट, तो मैं बता नहीं पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली। ये आंसर नहीं मिला अभी तक। क्या बात कर रहे हो भाई? मेरा लग देखो, मुझे C4 यानसन मिली है मुझे। Yeah, the mushrooms started popping up in our orchard not too long ago. कोई बात ना, मिल जाएगी। एज की रुकने का नाम नहीं लेगी। रुको मैं पानी पी के आता हूँ। ये एज की तो रुकने नहीं वाली। पानी। Of course, you're welcome anytime. That's a huge help, actually. I wanted to ask though, you said what remains of his clones? Does that mean there are clones outside of Natlan? Even now?
Zamarin? You know that name? Yeah, Paimon calls it Sheesh Room. It's absolutely huge! Way more impressive than the puny Sage Lord. We should go see Zamarin one of these अरे days. इसकी रुकने का नाम नहीं ले रही. Ooh, I'll come. It'll be nice to interact with a friendly mushroom for once. पता नहीं कौन याद कर रहा है. Okay, I'm back. I would never. चैलेंज पूरा कंप्लीट कर दिया. उसमें मैं सब चैलेंज भी पूरा कर लिया. रिवॉर्ड्स भी अनक्लेमेबल है. होल्ड ऑन, ये कंप्लीट हो गया. फील नहीं हुआ मुझे ये कंप्लीट होने जैसा कुछ खास. चलो अभी ट्राई करते. तुम इवेंट बोल रहे हो ना, वो इवेंट ट्राई करता हूँ, देखते हैं. लेट्स सी. ये इवेंट बोल रहे हो ना, चलो अभी ट्राई करते हैं, देखते कैसे ना हमारा. शायद कुछ वे आउट मिल जाए. अच्छा गाइस, वो हिचकी आ रही है ना, तो थोड़ा सा जरा उसको इग्नोर मार देना, क्योंकि वो मैं अभी पानी पिया लेकिन वो हिचकी रुक नहीं रही. थोड़ा तो मैं अजीब फील लगेगा. The last time I was here, I remember seeing him happily rolling around with HoYo. This is so sudden. Well, as the saying goes, illness strikes like a landslide. It's not uncommon for people and Saurians to just collapse overnight. Given that he first fell sick during the war, he's done well to make it this far. Hey, little guy. Are you okay? Does it hurt? For one so young to risk life and limb on the field of battle. This too is a responsibility we adults must bear. Whoa, all 6 tribal chiefs in one place? Not something you see every day. It's true that we used to hardly ever meet up like this. The affairs of our own tribes were usually enough to keep us all swamped. These days, though, group dinners on our days off have practically become the routine, so don't look too surprised. क्या है ये? Group dinners? More like group mooching. You guys always seem to end up at Pavonius my lands place. या So shameless. घंटा गाड़ी नो मोशी, कौन सा बोलाम बेटर है इयानसन के लिए? इयानसन के लिए आई थिंक उसका सिग्नेचर ही है ना, वो काइंड ऑफ. देखो, 2 ऑप्शन है. अगर तुम्हें पर्सनली इयानसन के लिए चाहिए एनर्जी रिचार्ज, उसके पर्सनल डैमेज और इसके पर्सनल डैमेज और उसके अटैक परसेंट के लिए, तो वो ओमोनोशी ओहानाशी जो भी है ओलाम, वो बेटर है. लेकिन तुम्हें टीम यूटिलिटी चाहिए तो फोवोनियस बेटर है. मैं हमेशा फोवोनियस के लिए ही प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि क्या है, फोवोनियस को क्या पूरी टीम को सपोर्ट करता है. तुम जिस पे भी फनल करना चाहो उसको फनल कर सकते हो. टीम यूटिलिटी बहुत है उसमें फोवोनियस में. अगर तुम्हें पर्सनली इयानसन का डैमेज अटैक परसेंट इंक्रीज करना है, उसको बेनिफिट मतलब वो, क्योंकि तुम्हारे एक्टिव कैरेक्टर को भी बूस्ट करेगा ना इन द एंड. I have read references to it in woven तो scrolls. उसके लिए वो नया वाला पोलाम बेटर है. अगर उस पर्टिकुलर एंगल से देखो तो there is said to have been सारा another परेशान हो way to गया है produce इससे. sacred flame, known as the Bloom Flower Trials. It was a combat exercise held jointly by the 6 tribes that was even more intense than the pilgrimage. So they occasionally yielded an even purer form of sacred flame. Sacred flame crystals! For real? How have I never heard of that? Simple. The Bloom Flower Trials haven't been held for centuries. Something seems to have happened the last time they were. The more ये स्किप करो सीधा, इसमें तुम मुझे इवेंट पे ले चलो.
ये इनकी बकबक बंद करो। I'd say we'd be ये better क्योंकि off मेरे not मेन आईडी से treating तो it ये like मुझे some करना ही kind of है। all-six tribe. Since the या war भी मैं skip ended, इसलिए कर रहा हूँ the क्योंकि मुझे pilgrimage has मेन आईडी become से भी more like करना a है ये सारा का tournament for सारा our क्वेस्ट। warriors to compete in and keep themselves in shape. मैं एक So why नया not प्लेयर let और them मेरे hone their पास ज़्यादा skills कैरेक्टर on a नहीं है। fresh new stage? अर्ली फुरीना और ब्राइट इसली है। We should never drop our guard बस अभी completely. मैं प्रीमोजन Even times of सेव कर peace. रहा हूँ। शिलोनेन But like को that, पुल कर it seems high करूँ या time we माउई का restarted the रीरन। Bloomflower trials. देखो अगर तुम एक न्यू प्लेयर हो तो मैं डेफिनेटली तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि शिलोनेन पुल कर लो। बहुत बेनिफिट वाली है वो कैरेक्टर। No objections on my part. देखो काजुहा, शिलोनेन, ये दो कैरेक्टर ऐसे यूनिवर्सल कैरेक्टर है ना, वो किसी भी टीम में तुम्हें सपोर्ट कर सकता है। इवन डेंड्रो वाली टीम में है जहाँ पे डेंड्रो और इलेक्ट्रो वाला वो सीन बनता है ना, रिएक्शन में नाम भूल गया उसका। आई थिंक वो स्प्रेड या कुछ तो भी बोलते हैं, मैं उसका नाम भूल गया, सॉरी। मुझे ये काइंड ऑफ बीमारी है, मैं बीच बीच में नाम भूलता रहता हूँ। तो उसमें भी लाइक काजुआ काइंड ऑफ हेल्पफुल है अगर तुम पहले इलेक्ट्रोस्वेल करो तो बोलने का मेरा और मतलब ये है कि अगर तुम स्पेशली न्यू प्लेयर हो तो काजुआ और शिलोनेन पुल करना तुम्हारे अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तुम किसी भी मतलब तुम एनिमो कॉम्प नहीं खेल रहे हो और डेंड्रो कॉम्प नहीं खेल रहे हो तो मवी का क्या बोल रहा हो, शिलोनेन तुम्हारी आईडी के लिए बहुत प्यारी है। ये दो कॉम्प अगर तुम नहीं खेल रहे हो तो, क्योंकि वो एनिमो डैमेज इम्प्रूव नहीं करेगी, वो डेंड्रो डैमेज इम्प्रूव नहीं करेगी। तो ये दो एलिमेंट अगर छोड़ के तुम्हारे पास मेन डीपीएस दूसरे वाले हैं, लाइक आर्लिकिनो है तुम्हारे पास क्रायो वाला डीपीएस है व्राइथ इसलिए, तो डेफिनेटली ये शिरोनेन तुम्हारे अकाउंट के लिए बहुत प्यारी होगी, नो डाउट। अकाउंट देख, ठीक है देखते हैं तुम्हारे अकाउंट को। ये मुझे कॉपी करने दो, ये पहले कॉमा हटाने पड़ेंगे नहीं तो काउंट नहीं करता साला। पूरा हो गया ना 110 910, ओके। आओ देखे। ये रही तुम्हारी आर्लिकिनो विद डेथ मैच, ओके। डेथ मैच के साथ भी तुम्हारा 53% क्रिट रेट। क्रिट रेट पे फोकस रखो, कम से कम 75%, 75% के आसपास रखो। और ये क्या है भाई, HP परसेंट मत यूज़ करो प्लीज़। यहाँ पे तुम्हें अटैक परसेंट ही यूज़ करना है ना। जो तुम्हारा ये है ना, क्या बोलते हैं उसे, सैंड्स, या ध्यान रखो सैंड्स इज इक्वल टू अटैक परसेंट। अटैक परसेंट सैंड्स पे तुम्हें देख रहा है क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, एलिमेंटल मास्टरी और फ्लैट अटैक। ये तुम्हें सब स्टैट चाहिए तुम्हारे सैंड्स पे। HP परसेंट नहीं, अटैक परसेंट चाहिए। पायरो डैमेज बोनस ठीक है, लेकिन उस पर भी स्टैट्स तुम्हें वैसे ही चाहिए, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, अटैक परसेंट, फ्लैट अटैक या फिर एलिमेंटल मास्टरी, है ना। ये है सब, कभी मत करना कि HP परसेंट में मुझे अच्छे स्टैट्स है इसलिए HP परसेंट यूज़ कर लिए। इससे होगा कुछ नहीं, तुम्हारा अटैक ऑलरेडी कम है क्योंकि तुम डेथ मैच यूज़ कर रहे हो तो उसका बेस अटैक कम है, तुम उसमें भी उसका यहाँ से अटैक हटा रहे हो तो ये देखो अटैक कितना मार खा गया, है ना। तो उसका पैसिव भी अगर तुम्हें यूटिलाइज करना है तो कम से कम 2200 के आसपास तुम्हें अटैक लगेगा। पैसिव उसका यूटिलाइज करना है जिसमें से तुम्हें डैमेज कम पड़ेगा, है ना। तो वो ध्यान रखना। मेरा अकाउंट देखकर थोड़ी टिप्स दो, जैसे कि टीम कंपोजिशन और कैरेक्टर का। वरिसा क्यूटी तो है। तो देखो अगर तुम्हें कॉम्बिनेशन चाहिए तो आई वुड एक्चुअली रिकमेंड कि तुम आर्लिकिनो लानियन, तुम्हारे पास C3 है लानियन, तो आर्लिकिनो लानियन, वो अगर तुम्हें वेव करना है तो तुम एक्चुअली ये शार्लेट भी यूज़ कर सकते हो। आर्लिकिनो लानियन शार्लेट एंड साथ में एक और क्रायो यूनिट डाल लो, डियोना वगैरह कुछ हो गई तो तुम्हारे क्रायो यूनिट का भी हो जाएगा और प्लस 12% क्रिट रेट मिल जाएगा टीम को। ऑफ फील्ड क्रायो एप्लीकेशन वाला यूज़ कर लो, जैसे कि काया वगैरह हो गया, काया भी यूज़ कर सकते हो इस टीम में, मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल होगा नहीं वो, लेकिन ऑफ फील्ड एप्लीकेशन के लिए बोल लो, एक सॉलिड टीम बन जाएगी तुम्हारी, क्योंकि आर्लिकिनो मेल्ट में बहुत सॉलिड डैमेज निकालेगी।
अगर तुम्हें अर्लिकिनो वेव करना है तो सेम, बट क्रायो की जगह तुम रिप्लेस करोगे इस टीम को, अर्लिकिनो, लानियन, शिनचू और बेनेट, ऐसा कर सकते हो। या फिर तुम्हें डबल अटैक परसेंट के लिए ये भी जा सकते हो तुम, आर्लिकिनो, बेनेट, लानियन और शार्लेट या फिर डियोना। शार्लेट की वैसे कुछ हीलिंग पार्ट की ज़रूरत नहीं है, बस क्रायो एप्लीकेशन के लिए तुम करवा सकते हो, ऑप्शन है। ऑफ फील्ड क्रायो ऑप्शन एप्लीकेशन वगैरह अगर तुम्हें मिले, लाइक सिटलाली वगैरह तुम फ्यूचर में पुल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रही बात तुम्हारी व्राइथिसली की, तो शांगलिंग के साथ तुम काइंड ऑफ यूज़ कर सकते हो बेल्ट्स वगैरह टीम के लिए, वो थोड़ा हार्ड होगा, स्पेशली तुम्हारा C1 है और तुम आए तो प्रिसेप्शन उसको यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा क्लंकी फील होगा व्राइथिसली। लेकिन टीम अगर तुम्हें बताऊं तो 2 टाइप की टीम है इसकी, या तो तुम इसको फ्रीज टीम में खेल सकते हो, फरीना, व्राइथिसली, सम सॉर्ट ऑफ हीलर जैसे कि शार्लेट चल जाएगी, शार्लेट डेफिनेटली चल जाएगी इसकी टीम में। और एक और यूनिट तुम देख सकते हो जो इसमें हेल्प करे तुम्हारे, लाइक बेनेट वगैरह यूज़ कर सकते हो यहाँ पे भी, या फिर तुम यहाँ पे भी ये जा सकते हो शांगलिंग, बस उसको ढेर सारा तुम्हें ये देना पड़ेगा, एनर्जी रिचार्ज वगैरह। पुरीना व्रायो प्लीज अभी करवाते हैं। 5.6 किनिश पुल करूँ नहीं या मवई का एंड्स कर पुल करूँ? देखो अगर तुम्हारे पास मवई का नहीं है तो डैमेज डीलिंग के लिए मवई का इज स्टिल बेस्ट DPS इन द गेम राइट नाउ। तो अगर तुम सिर्फ डैमेज तुम्हारा कंसर्न है, डैमेज वगैरह के लिए पुल करना, तो मवई का है। एंड आई वुड एक्चुअली से सेव फॉर स्कर्क, स्कर्क हो सकता है ब्रोकन यूनिट हो तो सेव करो, है ना। किनिच के लिए अभी पुल करना वर्थ इट नहीं होगा, सेव करो अनलेस तुम बहुत ही ज़्यादा किनिच फैन हो। बेनेट नहीं है, बेनेट मिल जाएगा, वो बहुत सारे बैनर्स पे आता है। बेनेट तो तुम्हें वैसा ही चाहिए, दोनों टीम के लिए बेनेट जरूरी है, तो कभी ना कभी तो तुम्हें बेनेट पुल करना ही पड़ेगा। होंका स्टारल का देखते हो क्या ब्रदर? होंका स्टारल मैंने छोड़ दिया गेम खेलना, वो कास्टरेस का जब सिचुएशन हुआ उसके बाद मैंने गेम ही छोड़ दिया। मेरे पास है कैरेक्टर्स बहुत सारे पड़े हुए, उसका बता सकता हूँ मैं, लेकिन ना मेरा मन उड़ गया है होंका स्टारल से। रही बात सुशील कुमार, साहिल कुमार, सॉरी माय बैड, रायतिसली एंड फरीना। फरीना 35 के HP, नॉट बैड, मेक श्योर मतलब 40,000 HP तो मेंटेन कर ही लो उसको। क्रेडिट के डैमेज बहुत सॉलिड है, एनर्जी रिचार्ज बहुत कम है, एनर्जी रिचार्ज 180 के आसपास रखो। स्किल मैक्स आउट कर लेना, क्राउन कर लो स्किल, बाकी बढ़िया है। सब स्टैट इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन ये दोनों डेड स्टैट है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर तुम फ्लैट HP और एनर्जी रिचार्ज अगर तुम्हें यहाँ पे मिला तो बहुत सॉलिड होगा ये। सैंड्स HP ये ठीक है, एक ही डेड स्टैट है, चल जाएगा, ये भी एक्सेप्टेबल है। ये डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकता है, बहुत रूम है इसमें इम्प्रूवमेंट की। दोनों डेड स्टार्ट है क्योंकि अटैक परसेंट यूजलेस है, डिफेंस यूजलेस है, सेम थिंग यहाँ पे भी, ये भी इम्प्रूव हो सकता है। यहाँ पे तुम एनर्जी रिचार्ज या फिर क्रिटिकल क्रिट डैमेज रेट है यहाँ पे, क्रिटिकल एनर्जी रिचार्ज, यहाँ पे तुम जा सकते हो। HP% फ्लैट HP, ये तुम्हारा यहाँ पे फुलफिल करेगा फिर, है ना। 180 के पास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 5 सेकंड वाला है ना, वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए रहता है वो बफ। वो बैनर लगा रखा है इसलिए, हाँ वो बैनर में तो है ही, वो बताना भूल गया मैं, लेकिन क्या करें अब, करना है तो करवा सकता हूँ मैं तुम्हें हेल्प उसमें। कास्टोरेस मुझे कैरेक्टर पसंद है, नो डाउट मुझे पसंद है, बस उसका ग्लोबल वाला जो सीन है ना वो मुझे पसंद नहीं आया, सो मैंने उसको खेलना छोड़ दिया अभी। वो बैनर पे से हटाना भूल गया मैं बस। ब्रो मेरा प्लम में क्रिट रेट डैमेज अच्छा है, अगर हटा दिया तो लिखो, मैं तुम्हारा सिचुएशन समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अगर
अच्छे स्टार्ट चाहिए तो तुम ग्राइंड करते रहो, अभी के लिए वो यूज करो, जब तुम्हें फ्यूचर में अच्छा स्टार्ट वाला मिले तो उसको चेंज कर लो तुम, है ना। तो फार्मिंग तुम्हारा रोको मत, तुम्हारा जो बेस्ट कैरेक्टर है जो तुम हमेशा यूज करने वाला हो उसके लिए जब तक तुम्हें परफेक्ट स्टार्ट ना मिले तब तक तुम फार्मिंग चालू रखो, कभी ना कभी तो तुम्हें वो परफेक्ट स्टार्ट मिल ही जाएगा और तुम्हें मजा आएगा तब। अरे अभी 10 दिन में एक फ्री कैरेक्टर मिलने वाला है 5 स्टार, देखो एक बार लॉग इन क्लेम कर देना। हाँ पता है, मैंने वो न्यूज़ पढ़ा, वही इन लोगों का मैंने देखा ना न्यूज़ और लाइव स्ट्रीम वगैरह, होंका स्टार है लेके फ्री। बेसिकली तुम्हें रॉन में या फिर लोचा में से कोई एक तुम कैरेक्टर चूज कर सकते हो। बेसिकली दोनों आउटडेटेड है। अगर तुम्हारे पास रॉबिन है, अगर तुम्हारे पास ये वो बच्ची कौन है, नहीं भूल गया मैं उसका नाम, भूल गया मैं, वो बच्ची है, मैं पड़ी है मेरे पास, रॉन में पड़ी है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। इवन, हाँ इवन निकाल सकते हो तुम। फायरफ्लाई की पूरी टीम है, फायरफ्लाई की पूरी टीम मेरे पास भी है, लेकिन इतना वर्स परफॉर्म कर रही है ना वो अभी एज अ फ्री टू प्ले कि मेरा मन ही उड़ गया था उस चीज़ से। वो इसकी वजह से मुझे दूसरा कैरेक्टर पूल करना पड़ा नई टीम बनाने के लिए। हीलर लोचा पावर क्रीप हो जाएगा वैसे भी, क्योंकि वो जो ये नई कैरेक्टर आ रही है ना, आई थिंक वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी हीलिंग के लिए, मेडी या फिर इसके कास्ट्राइज के साथ। क्या नाम था उसका, बारबारा जैसी वो दिखने, मैं उसका नाम भूल गया। 160 स्पीड 220 ब्रेक डैमेज के साथ ना, लोचे से बेटर तो डेफिनेटली बाकी कैरेक्टर्स है हीलिंग डिपार्टमेंट में, स्पेशली वो तो एनर्जी रीजन में भी हेल्प कर देगी। लोचा बहुत आउटडेटेड हो चुका है, अनलेस वो उसको बफ करे, है ना। वो बोले हुए थे कि वो ओल्ड कैरेक्टर बफ कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने लोचा को बफ किया, मुझे पता नहीं वो कैसे अगर बफ करने वाले, लेकिन अगर उन्होंने किया तो लोचा एक अच्छा यूनिट बन सकता है, बट आई डाउट कि वो ऐसा कुछ करेंगे। किया तो बहुत सॉलिड रहेगा, वो अलग बात है। I'll go discuss this with the others. I'm sure there will be plenty of warriors who'll be itching to take part. हाँ, क्योंकि वो 4 क्या Guarantee that Mualani will be there. काफी टाइम तक वो रहेगा फ्री वाला 5 स्टार, तो बहुत टाइम रहेगा तुम्हारे पास, इंफॉर्मेशन चेक करके पुल कर लेना आराम से। अगर तुम्हारे पास इवन रॉन में नहीं है तो तुम्हारे पास बहुत सॉलिड टाइम है कि फ्री में से वो उसको उठा के इवन कर लो, क्योंकि इवन रॉन में लाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर तुम्हारे पास रॉबिन है या फिर इवन रॉबिन है या फिर वो नई बच्ची है ट्रिबी, तो फिर तुम्हें ज़रूरत नहीं है रॉन में की, ना ही उसके इवन की। शॉप वाला भी बढ़िया है। शॉप वाला एक्चुअली बढ़िया तब होगा जब तुम्हारे पास एक E6 कैरेक्टर है, और E6 होने के बाद अगर तुम उसको उसकी एक और कॉपी तुम्हें मिलती है, तब वो तुम चीज़ जाके शॉप में उसको यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई कैरेक्टर E6 है ही नहीं तो तुम शॉप भूल ही जाओ, फिर वो शॉप तो हमारे लिए नहीं है। शॉप वाला सीन बस उसी के लिए है जो वेल है और जिसके पास E6 पड़े हुए हैं कैरेक्टर। ये चीज़ ध्यान रखना, भूलना मत। तुम्हारे पास E6 रॉबिन है, तो अगर तुम्हें एक और रॉबिन मिला तो तुम्हें एक क्रिस्टल मिलेगा, और तुम्हें 2 क्रिस्टल चाहिए एक 5 स्टार निकालने के लिए। एक क्रिस्टल मिलेगा फ्री, वो तो तुम फ्री वाले इसमें यूज करोगे ना। देखो एक क्रिस्टल तुम्हें मिल जाएगा, दूसरा क्रिस्टल में निकालने के लिए तुम्हारे एक कैरेक्टर लगेगा जो होना चाहिए E6, और उसके E6 होने के बाद भी तुम्हें उसी कैरेक्टर की एक कॉपी मिलनी चाहिए, तब तुम्हें वो मिलेगा क्रिस्टल सेकंड वाला। और फिर तुम वो 2 क्रिस्टल यूज कर सकते हो जो उस टाइम पे शॉप पे जो कैरेक्टर है उसको डायरेक्ट परचेस करने के लिए। बहुत ट्रिकी है वो, उन्होंने एक्सप्लेन ज़्यादा, मैंने वो लाइव स्ट्रीम देखी ना, उन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया ही नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन हो रहा है। मैक्सिमम E3 वेल्ट है वही, फिर वो शॉप हमारे लिए है ही नहीं ब्रदर। वो शॉप सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास E6 कैरेक्टर पड़े हुए हैं।
बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया उन्होंने, और बैकलैश झेलेंगे वो इस चीज का, बहुत बैकलैश झेलेंगे देखना, क्योंकि कंपेयर टू फ्री टू प्ले है लिटरली 1 या 2% प्लेयर बेस है जिनके पास E6 कैरेक्टर होगा, लिटरली 1 या 2%, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि टर्न बेस्ड गेम पे कौन ही इतना पैसा डालेगा E6 निकालो हर कैरेक्टर। We'll still need the Pyro Archon's final approval. नहीं एक्चुअली साहिल, जो तुम समझ रहे था ना, वो मुझे भी पहले वैसे ही लगा था, लेकिन तब मैंने थोड़ा सा इन डेप्थ उसको स्टडी किया और फिर उसको प्रॉपरली सबके साथ बैठ के उनको देखा हमने, जो बाकी क्रिएटर्स है उनके साथ बैठ के देखा, डिस्कस किया, और उसके बाद चाइनीज कन्वर्सेशन वगैरह जो बाद में पता चले, उसमें से हम लोगों को फिर पता चला कि वो जो सीन है ना, वो चोमू बना रहा है और कुछ नहीं, उसके लिए चाहिए E6 कैरेक्टर। तब साला हमें समझ में आया, नहीं तो पहले हमें भी यही लग रहा था कि भाई हमारे पास E3, मेरे पास भी एक्चुअली E3 बेल्ट पड़ा हुआ था, पता है, E4 है मेरे पास बेल्ट, E2 बाइलू है, E4 बेल्ट है, ये गेपार्ड E2 पड़ा है, तो हम लोग ये सोच रहे कि शायद इसमें से कोई एक कन्वर्ट होके मिल जाएगा हमें, लेकिन बाद में जब हमने डिटेल में उसको पढ़ा तब हमें पता चला कि वो अलग ही बकचोदी है उसकी, उसके लिए चाहिए E6, जो हमें गंदा फील हुआ है, बहुत गंदा लगा। Seems like he's quite the popular little fella, huh? Kakuku, can you hit them up and ask if they'd be down to run the claw? इसके लिए भी गेम में पैसा तो डालना ही पड़ेगा, नहीं वो तो तुम पे डिपेंड है। Must be nice having a Saurian companion who can talk. I mean, बहुत सारे एक्चुअली कंटेंट क्रिएटर क्विट कर रहे हैं या फिर पुल नहीं करेंगे कास्टराइज के लिए, ऐसे बोल तो रहे हैं, क्योंकि उसका जो ग्लोबल इफेक्ट है ना, वो देखो एक बार अगर कंपनी, देखो हम जो गेम खेल रहे हैं वो काइंड ऑफ कंपनी है, राइट? अगर कंपनी को आदत लग गई कि देखो उसके कस्टमर पैसा दे रहे हैं ये ग्लोबल इफेक्ट वाले कैरेक्टर निकालने पे, और जब आगे कंटेंट नया वो लोग लाएंगे और उसमें रिक्वायरमेंट ही रही कि ग्लोबल इफेक्ट वाले कैरेक्टर लाओ, तो ही तुम्हें इजी जाएंगे आगे के स्टेजेस, लाइक प्योर फिक्शन हो गया, अपोक्लिप्स शैडो हो गया, ये तुम ग्लोबल इफेक्ट वाले कैरेक्टर लाओगे तो ही तुम्हें इजी जाएंगे, नहीं तो बहुत हार्ड जाएंगे। और बाद में उनका इतना हो जाएगा कि वो लोग बोलेंगे कि नहीं तुम ये मस्ट पुल कैरेक्टर है, इसके लिए तुम पैसा डालो और पुल करो, है ना? तो वो एक प्रेशर करेंगे फिर प्लेयर बेस को, और वो एक प्लेयर बेस के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के अगेंस्ट, और मैं उनमें से एक हूँ। इसलिए मैं कैस्टराइज तो दूर की बात, मैं तो गेम को हाथ ही नहीं लगा रहा हूँ फिलहाल, मूड ही नहीं है उसकी वजह से। कैस्टराइज वर्थ इट है, लेकिन उसका ग्लोबल इफेक्ट जो है ना, मान के अभी तो सिर्फ तुम्हारा ये कैरेक्टर, मतलब तुम्हारी टीम में नहीं भी होगी तो तुम्हारे कैरेक्टर्स को बचा लेगी मरने से। अगर ऐसे उन्होंने कुछ और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए, लाइक तुम्हारी पूरी टीम को, पूरे अकाउंट को अटैक परसेंट या फिर क्रिट रेट बफ करे, सोचो नया कैरेक्टर उन्होंने लाया कोलैबोरेशन वाला, तुम्हें याद है ना कोलैबोरेशन होने वाला है अभी, तो उसमें उन्होंने एक आध दूसरा कैरेक्टर ऐसा ला दिया कि भाई तुम्हें बस ये कैरेक्टर पूल करना है, फिर तुम्हारे पूरे अकाउंट वाइड में 25% क्रिट रेट रहेगा सारे कैरेक्टर्स को, और मान के चलो बाकी तुम्हारे जिन के पास है ना कि 20% 25% क्रिट रेट, 50% क्रिट डैमेज पैसिवली मिल रहा है पूरे अकाउंट में, तो उनको कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत ईजी हो जाएगा कंपेयर टू जब तुम्हारे पास वो कैरेक्टर नहीं होगा, तब सोचो तुम्हारे अकाउंट की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि देखो जब ऐसा कैरेक्टर उन्होंने ऑलरेडी एक इंट्रोड्यूस किया है कि तुम्हारे बस वो अकाउंट तुम्हें कैरेक्टर पुल करना है, फिर तुम्हारे अकाउंट में कोई मर नहीं सकता, वो एक बार रिवाइव कर देगी, भले ही वो तुम्हारे उस लाइनअप में नहीं हो तो भी। तो ऐसे अगर कोई दूसरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस, क्योंकि एक कैरेक्टर से तो डेफिनेटली नहीं रोकेगी कंपनी, अगर मैं बिजनेस टाइप से देख रहा हूँ तो मैं एक पे तो नहीं रोकूंगा, मैं दूसरा कैरेक्टर ऐसे ही इंट्रोड्यूस करूंगा कि ले भाई पैसिवली क्रिट रेट दे रहा हूँ, पैसिवली क्रिट डैमेज दे रहा हूँ, पैसिवली डैमेज बोनस दे रहा हूँ, बिना टीम में रहे हुए, तो बेसिकली प्लेयर बेस खा जाएगी और कुछ नहीं। वही इसीलिए तो तुम देखो ना, काफी बड़े बड़े यूट्यूबर जो है वो भी प्रोटेस्ट इसी चीज के लिए तो कर रहे हैं।
कि वो ग्लोबल कुछ भी करके वो ग्लोबल हटाए या फिर कास्टोरेज सबको फ्री में बांटो। ये सेकंड ऑप्शन उसका वही है, जो भी प्लेयर है उनको फ्री में तुम कास्टोरेज बांटो, तभी वो वैलिड होगा। नहीं तो मतलब वो बकचोदी होगी बेसिकली, और कुछ नहीं। Guess they're chiefs for a reason. When they decide on something, it gets done right away. मेरे हिसाब से अगर उन्होंने ग्लोबल पैसिव वाले कैरेक्टर ऐड करवाने ना, तो वो कैरेक्टर तुम फ्री में बांटो सबको, तभी वो वैलिड होगा। नहीं तो तुम ऐसे पैसिव इंट्रोड्यूस ही मत करो। ग्लोबल चाहिए ही क्यों ऐसे गेम्स में? गेम का एक्सपीरियंस पूरा खराब कर रहे हैं ये लोग। सोचो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो स्पीड बफ के लिए, तुम्हारे आर्टिफैक्ट्स के लिए, तुम्हारे जो ऑर्नामेंट्स वगैरह उसमें तुम इतने फार्म करते हो कि उसमें प्रॉपर स्टैट्स चाहिए, क्योंकि स्पीड इज किंग। ऐसे मतलब जो टर्न बेस्ड गेम है उसमें स्पीड किंग रहता है, तुम उस स्पीड के लिए इतना कोशिश कर रहे हो, और बीच में ही कोई ऐसा ग्लोबल कैरेक्टर आ जाएगा कि जो बस तुम्हारे अकाउंट में चाहिए और तुम्हें 25 स्पीड बोनस दे देगा तुम्हारे पूरे अकाउंट को, तो तुम्हारे तो एफर्ट वेस्ट हुए ना उस टाइम पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी HSR का स्टेट ऐसा है कि नया प्लेयर जो है उसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है कंपेयर टू ओल्ड प्लेयर्स। पुराने यूनिट्स क्योंकि तुम जानते ही हो कितने टट्टी है मैम, और नए कैरेक्टर से जो नया आ रहा है वो नए कैरेक्टर आराम से पुल कर सकता है, तो उनको तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। बट वो भी जब पुराने इसमें जाते रहेंगे तो उनको नुकसान ही होगा। और एक नुकसान वाली बात ये है, ये जो मल्टी बैनर वाला है उन्होंने, लाइक अगर तुमने देखा है तो कैस्टोरेज के साथ एक्रोन रन हो रही है, जाशो रन हो रहा है, और आई थिंक एक और कैरेक्टर कोई ऐसा रन हो रहा है। हाँ 4 बैनर। तो अगर मेरे खुद के पास E2 S1 एक्रोन है और मुझे जाओचाओ पुल करना है, तो सोचो मैं एक्रोन पुल करूँ, मैं जाओचाओ पुल करूँगा एक्रोन टीम के लिए, या फिर मैं एक्रोन पुल करके एक्स्ट्रा पैसा डाल करके कैस्टोरेज के लिए जाऊँगा? नहीं, क्यों करूँगा मैं? मेरे लिए तो एकदम टट्टी सिचुएशन हो गई ना। और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिमिलर सिचुएशन से जा रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत में ये जाओचाओ स्किप कर दिया, और बाद में उसका बैनर खत्म होने के बाद पता चला कि भाई एक्चुअल में ये बहुत बेनिफिशियल कैरेक्टर था, इसको पुल नहीं करना चाहिए था, इसको स्किप नहीं करना चाहिए था E2 के लिए। मैंने E2 के लिए जाओचाओ स्किप किया था और मैं बहुत रिग्रेट कर रहा था उस टाइम पे। मैं अभी भी बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ मेरा डिसीजन कि मैंने E2 एक्रोन के लिए जाओचाओ स्किप किया, और अब जाके मुझे पता चल रहा है कि जाओचाओ बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है एक्रोन को सही तरीके से और फास्ट उसके स्टैक्स बिल्ड करने के। तो अब मैं तो फंस गया, तो मैं साला जाओचाओ पुल करूँ या उसको पुल करूँ, और ऑलरेडी उसको कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है पूरे कम्युनिटी में। तो मतलब एक दिक्कत खत्म नहीं हो रही, दूसरी दिक्कत पहले आ रही है। ऐसे नहीं कि एक दिक्कत खत्म हो रही है बाद में दूसरी आ रही है, एक ही टाइम पे 10 दिक्कत, खत्म ही ना हो रहा कुछ। कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी। अबे इसको क्या हुआ? अच्छा इंडवेल करना वाला। हाँ अरे फ्री टू प्ले का प्रॉब्लम यही है ना कि ज़्यादा पुल्स मिल नहीं रहे हैं, और एक टाइम पे 3-3 4-4 बैनर आ रहे हैं। कहाँ से पुल करोगे? तो इतने तो अवेलेबल है ही नहीं पुल्स के, तो उसके एक साथ में डबल पुल करो, वो भी गारंटीड। 50-50 लूज भी करना है तुम्हें बीच में, मतलब एक चांस तो रहता है ना। वही तो गेम वाले गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, तभी तो लोग इसके अगेंस्ट जा रहे हैं ना, कैस्टोरेज वाले सीन के अगेंस्ट। और काफ़ी लोगों ने इसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठाई है वो मल्टी बैनर वाले सीन में, क्योंकि इम्पॉसिबल है ब्रदर। तुम फ्री एज अ फ्री टू प्ले, एज अ वेल्किन वाले भी, लाइट स्पेंडर वेल्किन वाले, तुम ज़्यादा से ज़्यादा अगर अनलकी भी हुआ है तो एक कैरेक्टर पुल कर सकता है, लकी हुए तो 2 मिल सकते हैं, लेकिन 3 तो इम्पॉसिबल है अनलेस तुम बहुत ही ज़्यादा लकी वगैरह जन्म के साथ कुछ उंडली वंडली में लक लेके पैदा हुआ। तो 3-4 कैरेक्टर बैनर की पुल करना इज़ लाइक बहुत रेयर थिंग है।
अभी तुम देखे वो पिछले चार में रॉबिन थी, डॉट वाली टीम थी, ये ऐसे कैरेक्टर उन्होंने लाए थे। वो लग रहे थे एक ही सिंगल कॉम के लिए लग रहे थे, वो एक टीम पूरी बनाने के लिए। सोचो कितना हार्ड होगा एज F2P जो वेल्किन वेल्किन भी बाय नहीं कर रहा, उसके लिए तो इम्पॉसिबल है। कहाँ से करेगा वो 4 कैरेक्टर पुल भाई। 3000 ओनली, वही तो। और ये गेम नहीं है भाई, HSR वर्थ इट नहीं है वेल करने के। तुम्हें वेल करना कुछ किसी और गेम में कर लो, ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। HSR में वेल करना मतलब तुम एक कैरेक्टर वेल करोगे, दूसरे पैच या फिर तीसरे पैच में नया कैरेक्टर आ जाएगा, वो पूरी तरीके से पावर क्रेप कर देगा। ले गया तुम्हारा पैसा पानी में। हटा जेड, रॉबिन फेशिया, वैकरॉन, पुरानी क्रायर DPS, वही इम्पॉसिबल है। देखो अगर पावर क्रिप का सीन थोड़ा कम रहता ना तो सोच भी सकते थे एक बार तुम कि भाई वेल कर लो। करंट स्टेट में अगर तुम HSR में वेल कर रहे हो तो तुम खुद के ही पैसे बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। I mean, मान के चलो तुम अभी आइक्रॉन E6 करते हो, है ना, और हर्टा अभी न कोई अगली ये जो कैस्टोरेज आ रही है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है, तो फ्यूचर में कुछ ऐसा एनिमीज भी होंगे जिनकी HP बढ़ेगी, HP इन्फ्लेशंस वगैरह भी होंगे, तो उसमें नुकसान ही नुकसान अपना ही है। कंपनी का नुकसान नहीं है, वो तो तुम पैसे ऑलरेडी उनको दे रहे हो, नुकसान तो हमारा होगा। अभी सीली का यही देख लो ना, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर सपोर्ट्स वगैरह है, वो भी बिल्ड E1 E2 वगैरह सपोर्ट्स है, तब तुम जाके सीली को यूज़ कर सकते हो आराम से, नहीं तो सीली भी क्लियर नहीं कर पा रही। वही ना, हर्टा को देख लो, हो गए तो वेट करना में जरा, कुत्ते को दूसरे रूम में। एकटा बसला तो तिथं एकटाच। ओके आई एम बैक, फिर मिलता है, चलो यस फिर मिलता है। नयन क्या कर रहा भाई, जल्दी करो, इसके बाद मुझे वो उसका भी स्टोरी कवर करना है यार।
अच्छा इनका तो आवाज वैसे भी नहीं आएगा ना। मऊगा के पास जाना अभी भाई इतना दूर क्यों है। चलो अभी जाते हैं स्पीकर चेम्बर पे चलो भाई। ये इवेंट वाला सीन है क्या देखते हैं अभी। I've read through your proposal, and it sounds like a great idea. Even if it wasn't for Milray's situation, there'd be many reasons to start holding the Bloomflower trials again. How many warriors have been signing up? Far more than we anticipated. Our warriors sure are fired up. The ones who came late even held a protest outside the sign-up booth. So we had to make an exception by adding a few more spots. So Okay, many people have signed up that we've had to divide the competition up into main matches and exhibition matches. Each main match will pit 2 different tribes against one another, while the exhibition matches will see 3 tribes going up against another 3. I'm planning to limit the number of spots for the exhibition matches. Accidents are more likely in tangled melees, so with fewer contestants, we can ensure that any injuries will be attended to promptly. Well, you've clearly thought this through with care. You have my approval. And don't worry, I'll find a way to fund it. Thank you, Archon. बताओ Where पैसा will दे the रही है। trials be held? I'll stop by later to see how things are going. But I won't be taking part. Wouldn't want to spoil everyone else's fun. The main venue will बात be तो near सही the है। Stadium of the Sacred Flame, with additional arenas set up around the various tribes. All right, I'm all out of questions. Keep at it, everyone, and thanks for your hard work. In that case, we'll be off. It's time we started organizing crews to set up the venues. Traveler, Paimon. Good luck. Huh? Good luck with what exactly? बताओ Hey, it's been a while, you two. Are you here about the Bloomflower trials too? तो मुझे 1 मिनट दियो मैं आया।
चलो आगे बढ़ते हैं. Yep, we sure are. Sounds like everything's going to plan. Bloomflower trials. The name alone इसमें fills me ओरोरॉन with फेम मिलेगा ना. nostalgia. ये भी अच्छा है I कैरेक्टर. first heard about it from my dad, who first heard about it from his dad, my old grandpa. Guess that means they were last held at least 500 years ago? Wait a sec. No, it must have been much earlier than that, then. Whoa. When you put it like that, it does feel kind of surreal that we're doing something that hasn't been done in such a long time. चिंता क्यों कर रही है तू? क्यों Got a भाग good रही है? feeling about this. We'll pull it off, rest assured. What makes you ask? I've never heard such a rumor before. And rationally speaking, it just doesn't even seem possible. The rules governing the तब तक Oda ये काम करो, resurrection have फटाफट लाइक protected सब्सक्राइब मारो. Natlan for many long years. And these rules are themselves fueled by the Sacred Flame's power. We've been working with the Sacred Flame all this time, and we've never noticed anything unusual about it. In essence, Sacred Flame crystals are just another form of the Sacred Flame. I can't imagine how they could possibly beguile human hearts. So please, be आज at शाम को ease. Prodigy भी And launch हो रहा है besides, ना. even if they did harbor some kind of evil यूट्यूब में जाके power, देखूंगा आज it will कैसे not है. cause any real trouble in the Natland we now live in. Not if I have anything to say about it. Our main priority right now is to hold the Bloomflower trials so we can collect enough Sacred Flame crystals to heal that little Tapetlosaurus. It's so reassuring to have you on our side, Moika. वही. Well, there are some things even I can't handle. For example, it just came to my attention that you've got some people waiting for you outside. Huh? Who could they be? You'll find out soon enough. Go on now. Don't keep them waiting. बेसिकली भगा रही है हमें. बताओ कौन असली मूवी का है? Finally, you're here! ये देखो ये पुराने आपके सारे क्या. Traveler Paimon, so basically... hold up, what happened to first come, first served? What I'm saying is I get to go first. What's going on? Why is everyone turned up all of a sudden? ये टीम में बना रहे क्या ये लोग? So, you know about the Bloomflower trials, right? I mean, we were wondering, have you decided which tribe you'll join? If not, how about the people of the Springs? What? We're allowed to take part too? Given that the trials haven't been held in so long, we're creating a new set of rules for them. किनिश separate का from the आवाज ones चेंज for the क्यों लग रहा है pilgrimage. मुझे? Don't tell me All of the किनिश का chiefs ये have बदला. agreed, but whether or not you compete or which tribe you support, well, that's completely up to you. As the hero who saved Natlan, your participation would be a huge morale boost for whoever you choose to join. In other words, recruiting you is every tribe's top priority right now. Oh, so that's what's going on! No wonder Chief Akatl wished us good luck just now. He must have known this was coming. And that's all for the chit-chat. I hope you're ready for some serious incentives. How do you like the sound of luxury hot spring vouchers? I'll even throw in a selection of fine gifts from the shop. Luxury hot देख रहे हो रिश्वत दे रही Sounds है. like Paimon's perfect vacation! If you join the Scions of the Canopy, we'll hold a great barbecue in your honor. The finest Le- quality meat. All you खाना can eat. वो भी फ्री में. You join right away! You'll even stand a chance of being taken on as a sidekick of the almighty Dragon Lord, Kahula! Yeah, no one wants that. Neat, you little... Lol. All you can eat barbecue? देख रहे हो खाना Join up बोलते with ही the Collective of खत्म. Plenty, and I'll provide a year's worth of training sessions and a personalized nutrition plan to help you become stronger than you already are. I doubt ये ज्वाइन करेगी. Not too keen on training.
but getting stronger does sound tempting. All I've got to offer are freshly picked vegetables, but I can guarantee they're really tasty. Ooh, could Paimon get some samples? Fancy some flying lessons? Or you could just hitch a ride. I'll take you soaring through the skies myself. Flying's kinda what Paimon does for a living. But flying around with the Traveler sounds like it could be a lot of fun too. I can bake Saurus crackers and green fruit chips. Oh, Paimon loves those too! Oh, this is such a tough choice. शिल्लुनेन कहाँ है वो क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रही है चीज But also because picking one tribe feels like we're betraying all the others. You know what? Paimon's decided to leave this one to you. ये बढ़िया है Paimon's pretty sure that isn't an option. Actually, it's not a bad idea. It could work for the exhibition matches at least. There'd be 3 tribes on one side versus 3 on the other for those. So, first half you're on our side. Second half on theirs. Sounds fair enough, right? Huh. Hadn't thought of that. Pretty clever. What? Really? क्लेवर क्या भाई बच्चा भी यही सोच रहा होगा आम बच्चा Those perks you mentioned earlier. Don't worry, my offer still stands. Enjoying ourselves is the #1 priority here. So it's settled then? For the first half of the exhibition match, you'll fight alongside us Scions of the Canopy, People of the Springs, and the Children of Echoes against the other 3 tribes. Feels just like the old days when we used to fight side by side. We're gonna be unstoppable! All right, it's nearly time. Let's get ready and head over there together. फाइनली इवेंट अनलॉक हुआ तो इसमें क्या है इसमें भी क्वेस्ट करनी है मुझे अबे तो ये क्या बकचोदी है भाई इवेंट कब मिलेगा फिर ऑल स्टेजेस तो कंप्लीट करने हैं तब जाके ये मिलेगा 3 पॉइंट इनवाइट कैरेक्टर के लिए क्या है क्राइटेरिया नॉट मेट ये सारा क्राइटेरिया ब्रॉन्ज 1 स्टार रेटिंग और अबाव इन ऑल स्टेजेस तो हो जाएगा दूसरे वाले साइड में ये साइड हाँ तो इजीली है कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे पे इवन होगा ना शायद अगर ये पुल हुआ मिलेगा वही इजीली मिल जाएगा वो एडिशनल टाइम ठीक है नॉट बैड कैरेक्टर तो सॉलिड है ओरोरॉन C0 भी सॉलिड है मेरे पास ऑलरेडी ओरोरॉन पड़ा हुआ है वो कौन है C0 ही है आई थिंक मेरे पास हाँ मेरे पास C0 है वो C1 हो जाएगा नॉट बैड सॉलिड अपग्रेड है ये तो और इलेक्ट्रो चार्ज वाली तो टीम भी है मेरे पे पड़ी हुई लाइक ओरिना यलान ओरोरॉन और साथ में इसको ड्राइवर बना लूंगा मैं सॉलिड एकदम सॉलिड टीम बन जाएगी मेरी मजे आ जाएंगे एक्चुअली मैं क्लोरीन वगैरह ये भी यूज कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ आई कैन यूज एक्चुअली क्लोरीन हियर फॉर इलेक्ट्रो चार्ज थिंग और सॉलिड बनेगी टीम नॉट बैड कर सकता हूँ मैं फ्यूचर में उसको Instead of confining themselves to the heavens,
gods should broaden their horizons in the world below. आओ देखते हैं। हाँ ये बकचोदी छोड़ो, सीधा तुम ये चालू करो। विनेश, और दिनेश ही नाम रख देते, विनेश क्यों लिखा? चलो स्टेज 1 स्टार्ट। देखते करना क्या है। बेसिकली ये सारे हमें चाहिए ऐसे। ये मिस हो जाएगा ना मेरा। अरे कहाँ जा रहा है? मैंने बटन कौन सा दबाया? तू जा कहाँ रहा है? ले ये तो फंस गया। होल्ड ऑन, मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं तो यूज विघ्नेश बोलता हूँ। मैं तो उसे विघ्नेश, ये सही है। ये फंस गया ना। तो यहां से बेसिकली मैं दूसरी जगह पे नहीं जा सकता ऐसा। अच्छा मैं इसको चेंज कर सकता हूं, तो ये चेंज करना। तो ये बकरी बंदी करनी भाई मैं। तो ये बकरी बंदी करनी है मैं, अब समझा मैं।
रुक जा, वो वहीं से आ रहा है। जल्दी चल भाई, जल्दी चल, टीम ना है। ले, हो गया 6 का 6। अगला तो लॉक है 16 घंटे के लिए। दूसरा कहाँ है? वो रहा ऊपर। चलो इसको भी करके देखते हैं। अब ये पता नहीं इसमें क्या करना है मुझे। पार्टी सेटअप, अच्छा बेसिकली डीपीएस करना है, कोई बात। वेपराइज रिएक्शन इज इंक्रीज बाय 100%। ओके, हाँ, नॉट बैड। तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, मुलानी क्यों चाहिए? मुझे नहीं चाहिए मुलानी, हद है यार। बैरेट क्यों चाहिए? पर बैरेट नहीं चाहिए मुझे। नहीं, ये टीम को हम बर्बाद कर देगी। हाँ तो बर्न वेव करवा ना। ये बढ़िया है, बर्न वेव करवाओ। जब मुलानी मस्ट है तो ऑप्शन ही नहीं छोड़ा इन्होंने। इसमें रिकॉर्ड वाला सीन हो रहा है, अभी करवाते रिकॉर्ड। अब ये क्या है? फाइटिंग नहीं करना था क्या? अच्छा, अलग अलग इधर जाके वो करना है साइड। ओके, इसमें क्या है? उधर तो कुछ नहीं है ना। हाँ बस पहुंच ही रहे हैं हम। हाँ तुम एक काम करो, बार बार यही फ्लैश कर लो। में कुछ कीड़ा चला गया क्या? वो अबे रुक जा, क्या है ये? रुक। Watch this! I see everything! Stop right there! Just as well! Let's ride!
हैं? बाइट कहाँ गया? ले, बाइट किया ही नहीं उसने। अब कौन सा करना है? ये वाला? मुझे बेसिकली वो तोड़ के जाना है। तो क्या कर रही है? ऊपर चल। कुछ पता नहीं चल रहा मुझे मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे कुछ घंटा पता नहीं चल रहा मैं कर क्या रहा हूँ। बढ़िया था गुरु। इवेंट हैज बीन कंप्लीटेड। पता नहीं कौन सा इवेंट कंप्लीट करना है। अच्छा ये तोड़ना है ना बेसिकली हमें। ले टूट गया। अब हमें वहां पे चलना। चलो ले बैठे। छह मिनट तो इधर ही बीत गया है। अलग बख्श होती है भाई। और 30,000 मोरना मिला मैं।
तो इसमें भी वही करना है क्या? ना, तो ये बाद में करूँगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें सेकंड वाला नहीं हो रहा, रुको अभी करते हैं फिर। ये वाला नहीं हो रहा क्या? When current on field character plunging attack hits enemies, their crit damage, ये ठीक है। तो इसके साथ तुम हमें एक बात ये दो ना, ओवरलोड ही करवाना है तो ओवरलोड ही करवाओ पूरी तरीके से। बफर वगैरह दो क्या इसको कुछ, क्योंकि पायरो इलेक्ट्रो ही चाहिए इसको। सो हाँ ये दिलाऊं, प्लंजिंग अटैक है तेल लेने, वरिसा की जरूरत ही ना है। अभी करवाते क्लियर, रुको टेंशन कहाँ ले रहा था। How about this? Take a seat. Let's have some fun, shall we? Into the shadows. बेटा कल ये लो इधर। अबे अबे उसके पास तो जा। Let's have some fun, shall we? Take your weapons. Ready. हुआ You'll have to get past me first. डोंट टेल मी एनिमी। अच्छा ये रहे ना, हो तेरी जात का इतना तो। Into the shadows. Shoot on sight. Burn it down. Headbutt. चल साल है। We need to be careful here. Let's have some fun, shall we? My light spark, the night burn. Our base is in danger. Justice Bolt. अबे तू बच कैसे गया? How about this? Take a seat. Stop right there. Move it. टेंशन काहे ले रहे हो तुम? अभी भरते हैं उसे हम। We need to be careful here. Hunt them down. Full throttle. You asked for it. Ready. डिफेंडिंग साइड में ना अभी हम।
अच्छा इसके लिए सिल्वर चाहिए। यो व्हाट्सअप भाई, आपका वरेसा कितना डैमेज दे रहा है भाई? मैंने वरेसा पुल ही नहीं किया तो डैमेज देने का मतलब देख ही ना पाना मैं। होल्ड ऑन, इसको सिल्वर में करना है क्या? एक काम करो, ये वाला तो हो गया ना, इसको करो तुम वेरी हार्ड में। प्लंजिंग अटैक 6 टाइम्स, ठीक है, सेम ही टीम है। चलो वापस करके देखते हैं, क्योंकि सारे रिवॉर्ड चाहिए ना, एक रिवॉर्ड से मन थोड़ी ना भरेगा। Let's ride. Drop your weapons! Hands where I can see them! How about this? Roll, take a seat. अरे लॉर्ड, Stop right there! Justice will prevail! Why me? Justice o'clock! Boof! Maximum power! ये रैप्ट हाउस को Let's ride. Try and stop me. Final warning! You asked for कहाँ भग रहे हो तुम लोग? Justice o'clock! Take a seat. Boof! Guard! Our base is in danger! मार किसको रही है? तो सब तो मर गए हैं। Let's ride. ये गजब टोपी मारे तू भी। You'll have to get past me first. Stop right there! Ready. Evil looks. Shoot on sight. Rise with the sun. Final warning! Justice will prevail! Into the shadows. Time to testify. Hero incoming! Headbutt! Stop right there! Hands where I can see ये रही, इसको पूछ के ऊपर गया तो मेरे को तो अल्ट देगा भाई। ये ले लोल भाई, कुत्ता बनाया भाई उसको, कुत्ता। कौन आ रहा है? डोंट टेल मी यहाँ से आ रहा है। अरे 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 अरे, Watch this! Evil looks. Shoot on sight. Burn it down. Justice o'clock! Boof! Yeah! Volcano kablam! One fell swoop! कौन आ रहा है? और Let's ride. Watch this! Ready. Time to testify. Light up the blazing sun. We should hurry back! बचा कौन है? Full throttle. भाई वो चूमू बंदे ऊपर बैठे थे, अब मैं क्या करूँ ऊपर बैठे हुआ तो। कोई बात नहीं, रिवॉर्ड तो कंप्लीट हो गया। ले लो भाई, दोनों रिवॉर्ड हो गए कंप्लीट तुम्हारे। सही है ना? ऑल डन। प्रोडिजी का है क्या अनाउंस है? अनाउंस
ओके अरे भाई ये जी एग्जैक्ट्रिक्स को दिखाने लायक है। लो बड़ी आगे 311 ये तो हो रहा है कंप्लीट। तो इवेंट डन है, क्वेस्ट डन है, एक्सप्लोरेशन बाद में कर सकता हूँ इसका, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी आई थिंक मुझे प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि सर्वर लॉन्च हो रहा है शाम को, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी मैंने। अच्छा एक नॉर्मल बैनर पे एक और पुल मारूं। नॉर्मल बैनर का मैं ऐसे सेव नहीं करता ना 10 पुल वगैरह, तो मिला मिला नहीं मिला नहीं मिला वैसे ही है। नॉर्मल डैमेज को कुत्ता भी, ये नॉर्मल बैनर को कुत्ता भी ना पूछ रहा यार, हो गया। ओके क्वेस्ट लॉग में सुमेर का बचा है, ये कौन सा आ गया? नेटलैंड को कौन सा क्वेस्ट है? एग्जीबिशन मैच कौन सी है अभी? पता नहीं क्या नंबर की चल रही है। तो रोल प्ले सर्वर प्रोडिजी का शाम को खुल रहा है। क्यू तो रहेगा भयंकर, देखेंगे अभी क्यू में अंदर जा पा रहे नहीं। ये तो वेब इवेंट होगा इसका, डेली चेक इन। ये तो चोमू बना रहा है, पहली बार करोगे तो ही मिलेगा तुम्हें। और जो फर्स्ट टाइम चेक इन बाद में ना मिला देता ही है, ये चोमू बनाता है। ठीक है ओडिशी टीजीसी का क्या करूं, मेरे को पसंद इतना कुछ खास नहीं पसंद है मुझे टीजीसी। तो चलो गाइस सी यू अराउंड, शाम को मिलेंगे है ना, शाम को मिलते हैं। आरपी स्ट्रीम करूंगा शाम को, GTA 5 रोल प्ले कैरेक्टर बनाएंगे उसमें, शायद मैं पुलिस वाला वगैरह या फिर ये नॉर्मल पहले तो सिविलियन बनेगा बेसिकली, लेकिन मैं फैट कॉप बनाऊं देखता है। तो शाम को मिलता है, चलो सी यू, टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट